Secretary, Niti Aayog, Shri Yaduvendra Mathur. Honorable Chief Minister will be joining us shortly for the workshop. I kindly request all of you to please take your seats. આપ સૌને વિનંતી છે જે સ્ક્રીન પર દેખાય છે ભીમ એપ અને SBI બડી આપ ડાઉનલોડ કરી શકો છો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ આપના આઈડી કાર્ડની પાછળના ભાગમાં આપેલ છે. થેન્ક યુ.
Hello, 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 hello. Good morning, everybody. Honorable Chief Minister Shri Vijay Bhai Rupani will be arriving in the auditorium very shortly. I kindly request all of you to please take your seats and
keep your mobile phones on silent or switch off modes. Thank you. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું આગમન થોડી જ ક્ષણોમાં આપણી વચ્ચે થશે. આપ સૌને વિનંતી છે, આપ સૌ પોતાનું સ્થાન સભાગૃહમાં ગ્રહણ કરી લો અને આપના મોબાઈલ ફોન સાયલેન્ટ કે સ્વિચ ઓફ મોડ પર કરી દો. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું આગમન આપણી વચ્ચે થઈ ચૂક્યું છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે સૌ સ્વાગત કરીએ. We warmly welcome Honorable Chief Minister Gujarat Shri Vijayabhai Rupani and dignitaries on the dais. Namaskar and a very good morning to all of you. Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited, GNFC, welcomes you all to this workshop on Cashless Township. Today we are privileged to have honorable presence of Chief Minister Gujarat Shri Vijayabhai Rupani. We have with us today Honorable Chief Secretary Gujarat Dr. J.N. Singh and Honorable Additional Secretary Niti Aayog Shri Yaduvendra Mathur. We welcome you, sir, at this occasion. We also welcome all the township administrators from the state, district collectors, and all invitees attending the workshop and members of media at this occasion. At the commencement of the inaugural session, we invite Managing Director of country's first cashless township, GNFC, Dr. Rajiv Kumar Gupta, for the welcome address. Honorable Chief Minister, sir. Honorable Chief Secretary, sir.
Secretary of Niti Aayog, Shri Yaduvendra Mathur ji, collectors of various districts, township administrators from all over Gujarat, more than 150 townships, my dear friends from media, ladies and gentlemen. On behalf of JNFC, I welcome you all here in this first of its kind workshop on cashless townships. After the Honorable Prime Minister gave the clarion call to the nation to go cashless, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Rupani ji, took the challenge very seriously. And he directed all the departments to go cashless in their operations. Huge digital infrastructure has been created in Gujarat during the last 3-4 months. And more importantly, Honorable Chief Minister has been able to generate a sense of great enthusiasm amongst the people to go cashless. We in GNFC have been deeply influenced by the single-minded determination and drive of Honorable Chief Minister, and therefore we decided to go cashless in our sales operations of fertilizer first, and thereafter we decided that we'll also go cashless in our township. We have been so greatly supported by Honorable Chief Minister that he consented to launch the first ever 100% cashless township of India at a just short notice of 24 hours. Not only that, he also declared the intention, the decision of the government to turn all such 180 plus townships in Gujarat as cashless townships. Owing to this extraordinary zeal and interest of the Honorable Chief Minister, we have gathered here today for this workshop. I'll be failing in my duties if I don't place on record our sincere gratitude to Niti Aayog, which is headed by the Honorable Prime Minister of India. Niti Aayog has examined and analyzed the GNFC 100% cashless township model and has taken it up for adoption, replication all across the country. I am very grateful to Honorable Chief Secretary, who has guided us, helped us, steered us all through in this entire drive. On behalf of all the collectors who are present here and all the township administrators who are present here, I would like to reassure the Honorable Chief Minister, sir, and also Niti Aayog, that we leave no stones unturned in turning these townships as cashless townships of India in order to fulfill the vision of the Honorable Prime Minister for a cashless society. હું ફરીથી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું અને આપ સૌનું જીએનએફસી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરીને વિરમું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you so much, sir. We take this opportunity to welcome our honorable dignitaries on the dais. Managing Director GNFC Dr. Rajiv Kumar Gupta ને વિનંતી કરીએ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું આજના અવસરે પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરે. We request Shri Pankaj Kumar Gupta, CEO and Good Solutions, to welcome Honorable Chief Secretary, Government of Gujarat, Dr. J.N. Singh. We request Shri C.P. Bhutani, Corporate Head, Delhi GNFC, to welcome Additional Secretary, Niti Aayog, Shri Yaduvendra Mathur. Thank you. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ડિજિટલ કેશલેસ ઇકોનોમીના આહવાન બાદ
જીએનએફસીએ આ દિશામાં આગવી પહેલ કરીને ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં 5,500 લોકોની વસ્તી ધરાવતી જીએનએફસી ટાઉનશીપને 100% કેશલેસ બનાવેલ છે, જેનું તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આવો આ અંગેની એક ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ નિહાળીએ. कैशलेस समाज एक स्वच्छ समाज है. कैशलेस समाज एक साधु समाज है. कैशलेस समाज एक प्रगतिशील समाज है. कैशलेस व्यवहारोની વાત કરતા ડેબિટ કાર્ડ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા હોટેલનું બિલ અથવા ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરમાં ચૂકવણી આપની નજર સમક્ષ આવે છે. આ હું તમને એક એવી જગ્યાએ લઈ જઈશ કે જ્યાં પાન પણ કેશલેસ વ્યવહારથી ખરીદાય છે. સાયકલ રિપેરિંગની દુકાનમાં સાયકલ, રોજ વપરાતી શાકભાજી, આ બધું જ કેશલેસ વ્યવહાર થકી થાય છે. અને આ છે ગુજરાત નર્મદા વેલી ફર્ટિલાઇઝર્સ અને કેમિકલ્સ લિમિટેડ ભરૂચ ગુજરાતની ટાઉનશીપ. આ ટાઉનશીપમાં આશરે 1,000 ઘરોમાં 4,500 લોકો રહે છે. સાડા 5,000 લોકો કંપનીમાં કામ કરે છે. તદુપરાંત અનેક પ્રોવિઝન સ્ટોર્સ, સ્કૂલ, હોસ્પિટલ, સ્ટેડિયમ, રેસ્ટોરન્ટ ઉપરાંત ખાણીપીણીની અન્ય દુકાનો આ ટાઉનશીપમાં આવેલ છે. પણ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના રાષ્ટ્રને કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શનના આહવાન બાદ આ ટાઉનશીપના રહેવાસીઓ એક સંકલ્પ કર્યો. તેઓ જે કરશે કેશલેસ કરશે. તેઓ ધોબીની દુકાને જઈ સ્વાઇપ મશીન દ્વારા બિલ ચૂકવે છે. હોસ્પિટલનું બિલ ઈ-વોલેટથી ચૂકવાય છે. આ તો કંઈ જ નહીં, એક ચાનો કપ પણ આ ટાઉનશીપમાં રૂપે કાર્ડથી ખરીદાય છે. સ્કૂલની ફી પણ બિન રોકડ વ્યવહારમાં ચૂકવાય છે. આ એક એવી પ્રગતિશીલ ટાઉનશીપ છે જેમાં લોકો એક મોટા ઔદ્યોગિક સંકુલમાં કામ કરે છે. આ અહીં અટકતું નથી. જીએનએફસીએ તો ખેડૂતોને છેલ્લા થોડાક દિવસમાં કેશલેસ વ્યવહાર દ્વારા તેની 1,000 દુકાનો થકી 50,000 ખેડૂતોને ખાતર વેચેલ છે. એક ક્ષણ વિચારો ખરા, ફક્ત ગુજરાતમાં જ આવી 180 ટાઉનશીપ્સ છે કે જેમાં 5 લાખથી વધુ લોકો રહે છે. અને દેશમાં આવી કંપનીઓ અને ટાઉનશીપોની સંખ્યા હજારોમાં હશે. જો જીએનએફસી આ કરી શકે તો પછી બધા ઝડપથી કરી શકે. બસ જરૂર છે દ્રઢ નિર્ણય શક્તિ, થોડી સઘન મહેનત અને મેનેજમેન્ટ દ્વારા શિસ્તબદ્ધ આયોજનની. આ રીતે આવી કેશલેસ ટાઉનશીપ મોટા શહેરો કેશલેસ થશે તે માટે પથદર્શક બની શકે. નોટબંધીનો જે કાર્યક્રમ હિંમતથી નરેન્દ્રભાઈ લીધો અને ત્યાર પછી આ દેશમાં કેશલેસ ઇકોનોમી એ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. એ માઇન્ડસેટ કેશલેસ બનાવવું જે જીએનએફસી ના પરિવારોએ જે એડોપ્ટ કરી છે, બહુ મોટું ક્રાંતિકારી પગલું આ જીએનએફસી એ ભર્યું છે. તો મિત્રો આવો, આપણે સૌ જે મોટી કંપનીઓના ટાઉનશીપોમાં રહે છે અથવા તો સંગઠિત સંકુલોમાં રહે છે તે નવા વર્ષ 2017નો સંકલ્પ કરીએ કે આપણે સરળ, સ્વચ્છ અને પ્રગતિશીલ કેશલેસ વ્યવહારો અપનાવી રાષ્ટ્રને માટે ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડીએ. જીએનએફસી ખાતેની ઉદાહરણીય કામગીરીની આ હતી એક પ્રેરક ઝલક. Under the guidance of Honorable Prime Minister, Niti Aayog is actively involved in promoting digitalization process across the country. We invite Additional Secretary Niti Aayog, Shri Yaduvendra Mathur, to enlighten us on the subject and address the August gathering. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Chief Secretary Dr. Jayan Singh, sir, MD Dr. Rajiv Gupta, other dignitaries, collectors of various districts and township administrators from across Gujarat, friends from media, ladies and gentlemen. Sir, at the outset, let me extend our greetings from Shri Amitabh Kanji, the CEO of Niti Aayog, who was to be here, and I'm in his place, but he was required in a very urgent meeting
and at the PMO, and he had to cancel his program only last evening. Sir, on behalf of Niti Aayog, I extend our wholehearted appreciation for the extraordinary drive for cashless transactions being carried out under your leadership, Honorable Chief Minister, sir. The government of Gujarat has carried out this multidimensional initiative by providing the needed digital infrastructure and generating immense awareness and enthusiasm among citizens at large for going cashless. Honorable Chief Minister, sir, you launched the first Cashless Township of India, GNFC Township, on 8th of February, and we from Niti Aayog were so excited knowing about what happened in Bharuch, and we immediately requested the Managing Director, Dr. Gupta, to make a detailed presentation at New Delhi on the Cashless Township model in front of secretaries of major departments. Sir, we are all excited to see what's happening here, and we all feel unanimously that this model has to be replicated effectively in thousands of townships across the country. The 100% cashless GNFC township model is, Rajiv ji, a unique example of how strong determination and the commitment from the top management can make what appears to many a very difficult and, in fact, an impossible kind of task become a reality. And it is with that spirit of team that we from Niti Aayog stand committed to see that this model is considered and implemented as a doable and implementable model all across the country. This workshop today, sir, I was told has got more than 150 senior representatives from townships across Gujarat here, and I think there is tremendous interest seeing this model being replicated, and I'm sure with the collectors and the Chief Secretary, sir, giving the necessary directions, and under your leadership, sir, Gujarat will again be a pioneer in this transformation to weed out black money and corruption from public life, and the vision of our beloved Honorable Prime Minister, who is also the chairman of Niti Aayog, and he is driving this, he is monitoring this program very, very closely. This is something which is extremely close to his heart. I need not say that, you know that better. And a committee of officers in Delhi has been constituted to enable this full review and full support. The Digidhan Melas have again been able to create the wave all over the country. More than 60 Digidhan Melas have been held by now. And this Lucky Grahak Yojana, the Lucky Vyapar Yojana, is also encouraging citizens to adopt digital payments. The Bheem app, which we are all being encouraged to download, even today the Bheem app and the SBI Buddy apps are available to be downloaded. They have again been, massively accepted. It has created a world record, and 17 million downloads of the Bheem app bear testament to the resounding success of this initiative. And very recently, the new Scan and Pay solution, Bharat QR, only last week was also launched by NPCI, and the results are very encouraging. Coming back to this workshop on how the townships can commit and move on this very rapidly, I'm told in as short a period as 10 days, GNFC Bharuch could, really create this into a big movement. And the whole family, which is there in a township, many of us have grown in similar townships, and it is entirely possible, only it needs the encouragement and determination on the part of top management and the will of the citizens living in those townships to be a part of it. If GNFC can do it, so can we. I think that is the message you all should take back to your townships, and the technical support and guidance from the government will be forthcoming, completely forthcoming, and if there is any way in which the Niti Aayog can come into support, we'll be more than happy to do that. Sir, I once again compliment the leadership of GNFC. Sir, your leadership, sir, you coming here today for this program encourages all of us, sir,
And sir, your regular review and guidance is what is needed to make this huge campaign being watched and known all across the country, and this will really transform the lives of our people. GNFC, very especially, even for the fertilizer Kharif season, sowing operations are on, and this is exactly the time when the requirement of introducing this through the discount scheme like GSFC did. Again, their sales went up when all over the country we were hearing that sales may go down, but just because you could move through more innovative methods, and every problem has a solution, what is only needed is innovativeness. And I think on all these counts, GNFC deserves full appreciation, and I thank GNFC for involving Niti Aayog in this event. Thank you once again, sir. Thank you, sir, for your valuable inputs and guiding address. અને હવે ગુજરાતને પારદર્શી, સંવેદનશીલ, પ્રગતિશીલ અને નિર્ણાયક નેતૃત્વ પ્રદાન કરી રહેલ ગુજરાતના કર્તવ્યનિષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, જેમણે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં અનેક લોક કલ્યાણકારી નિર્ણયો દ્વારા સર્વસમાવેશી વિકાસની કટિબદ્ધતાનો પરિચય કરાવ્યો છે. આવો આમંત્રિત કરીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને પોતાના પ્રેરક સંબોધન માટે. मंच पर उपस्थित नीति आयोग के सचिव श्री माथुर जी, चीफ सेक्रेटरी श्री जयंत सिंह, जीएनएफसी के एमडी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, उपस्थित भाई और बहनों, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो नोटबंदी के बाद इस देश में जो माहौल बना है, प्रामाणिकताનું પર્વ અને ઈમાનદારીનો ઉત્સવ, एक स्वच्छ इकोनॉमी अपने देश में बने और पूरे दुनिया में भारत सही दिशा में इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है. जो बेसिक आवश्यकता थी कि डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारी देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है, और हमने वाइब्रेंट गुजरात में भी देखा, सभी लोग सराहना कर रहे थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इकोनॉमिकल चेंज जो कर रहे हैं, जो नए नए कदम उठा रहे हैं, उस पर भरोसा बढ़ गया है पूरी दुनिया में, और देश में भी एक माहौल बना है कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. सब लोग पॉलिटिकल भी चिंता कर रहे थे कि क्या होगा, इतने परेशान लोग हैं. सभी ऑपोजिशन ने भी एक साथ मिलकर हंगामा किया था, पूरी संसद चलने नहीं दी. लेकिन अब महाराष्ट्र का चुनाव का नतीजा नोटबंदी के साथ वोटबंदी भी जुड़ गई है. मुझे लगता है कि पूरी दुनिया, देश, गरीब, किसान, सभी लोगों ने इस बात को एंडोर्स किया है कि आपने जो कदम उठाया है वो सही कदम है. और उस दिशा में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. और ये स्वच्छ इकोनॉमी, ये सिर्फ नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन एक ही कदम नहीं, इसके पहले से ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, और आने वाले दिन में भी कदम आगे बढ़ते जाएंगे. उस दिशा में गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है, एक स्पष्ट और दिशा दर्शन देने वाला हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी तय किया है कि जल्दी से जल्दी ये माइंडसेट बदले, जो कैश इकोनॉमी के बदले कैशलेस इकोनॉमी, और उसके आधार पर ये माइंडसेट बने और लोग वहां कैशलेस के जो
साधन सामग्री है उसका उपयोग करें। जिस तरीके से जीएनएफसी ने एक प्रायोगिक धोरणे उन्होंने ये काम चालू किया है, और मैं गया था लॉन्चिंग के वक्त, सब लोग मिले थे, और एक और आगे स्टेप भी ले लिया है कि वहां जो मंदिर है वहां भी बोर्ड लगा दिया गया है कि भाई कैश मना है, ईश्वर भी नहीं लेंगे। और वहां पेट मशीन क्या लगाया है, पॉस मशीन भगवान के चरणों में रखा है, और वहां भी आप अपने कार्ड का यूज कीजिए। तो उस तरीके से पूरा टाउनशिप कैशलेस बन गया है। जिस तरीके से हमने वीडियो फिल्म देखी, एक साइकिल वाला, टायर वाला, अपने लॉन्ड्री वाले, और सब्जी मंडी में भी ये सब यूज हो रहा है, और लोग आनंद से, उत्साह के साथ कर रहे हैं। उसमें कोई, उनको भी प्रफुल्लित है वो सब लोग, और अच्छी तरह से ट्रांजैक्शन हो रहा है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। हमारी पीडीएस सिस्टम हमने पूरी कैशलेस की है। सभी पेट्रोल पंप और बाकी सब ने, हमने वहां भी ये सब मशीन्स लगा दिए हैं, और धीरे धीरे एक एक सेक्टर को लेकर गुजरात में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस दिन ही एक विचार कर दिया था कि गुजरात में 180 टाउनशिप है, अलग अलग कंपनियों का भी है, गवर्नमेंट का भी है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस, बाकी सबकी टाउनशिप है। तो वहां इजीली ये हो सकता है, और आज वो निर्णय करने के लिए आप सब लोग को यहां आमंत्रित किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात में जितनी भी टाउनशिप है वो सब कैशलेस होगी, और 5 लाख से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व भी होंगे, और पूरे देश को गुजरात दिशा दर्शन देगा। गुजरात का इनिशिएटिव पूरे देश को एक नया मॉडल प्रस्तापित करेगा, और मोदी जी ने जो उनका स्वप्न है कि जिस तरीके से दुनिया जिस दिशा में जा रही है उसके साथ हम भी आगे बढ़े, तो वो सपना हम साकार करें। गुजरात उसमें आगे होगा, और नीति आयोग उन्होंने भी सराहना की है कि गुजरात की जीएनएफसी का जो मॉडल है वो पूरे देश में कैसे इंप्लीमेंट हो। तो उस दिशा में आज की ये सेमिनार, आज का ये मीटिंग, मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली रिवॉल्यूशन में ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगा, और गुजरात सबसे आगे और सबसे पहले इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये हम निश्चित दावे के साथ कह सकते हैं। और स्वच्छ इकोनॉमी जब होगा तभी सिस्टम में जब काम चलेगा, तभी जो अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उनका हम कल्याण कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि डीमोनेटाइजेशन और कैशलेस ड्राइव हमारे देश के लिए आने वाले दिन में एक महत्वपूर्ण कदम है, और उसको हम पूरा सपोर्ट, पूरे उत्साह के साथ हम कर रहे हैं। लोगों में से भी उनका प्रतिभाव अच्छा मिल रहा है, और लोग भी मानते हैं कि ये जल्दी होना चाहिए। सिर्फ आवश्यकता है दृढ़ निर्णय करने की, और गुजरात गवर्नमेंट ने उस दिशा में आज कदम जो उठाया है उससे पूरा लाभ होगा। सबसे पहले जीएनएफसी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और इसके बाद गुजरात की सभी कॉलोनी उस दिशा में कदम उठाएंगी, और हमारे लिए तो एक तैयार मॉडल है। जीएनएफसी ने तो सब कुछ किया होगा, हमें तो सिर्फ वो सब तैयार है उसको बिठाना है। तो उस दिशा में जल्दी से जल्दी हम सभी ये जो कॉलोनीज है उनको कैशलेस बनाकर
धीरे धीरे सबको उसमें प्रेरित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी का, और सभी मंचस्थ महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। With this, we conclude this inaugural session, and after which we'll be heading for the technical sessions. We once again thank all the honorable dignitaries on the dais, and we thank Honorable Chief Minister Shri Vijay Rupani. I request all of you to please be seated on your seats till honorable dignitaries leave the auditorium. Now we'll be parting for a short tea break for 15 minutes, after which we'll start the technical sessions. માત્ર 15 મિનિટનો વિરામ ટી બ્રેક, અને ત્યારબાદ આપણે ટેકનિકલ સેશન્સ તરફ આગળ વધીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. હલો હલો. All the members of media may please join for lunch. And we all, after a short tea break, will reassemble here in the auditorium for the technical session. The media personnel can please proceed for the lunch. Thank you. સર્વે મીડિયા કર્મીઓ, લંચ માટે સૌને આમંત્રણ છે, અને બાકી આપણે સૌ 15 મિનિટમાં ટી બ્રેક બાદ અહીંયા ફરી એકત્રિત થઈશું. हेलो 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 आए तो बिल्कुल सेट. हेलो 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 चेक चेक चेक.
All delegates are requested to kindly quickly reassemble in the auditorium. We are heading for the technical sessions. ફરી એકવાર કેશલેસ ટાઉનશીપના આજના આ વર્કશોપમાં આપ સર્વેનું જીએનએફસી વતી સહર્ષ સ્વાગત છે. આપ સૌને વિનંતી છે ઝડપથી સભાગૃહમાં પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો. હવે પછીના સેશન તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે આપ સૌને વિનંતી છે સભાગૃહમાં શાંતિ જાળવી રાખો. મોબાઈલ ફોન સ્વિચ ઓફ કે સાયલેન્ટ મોડ પર કરી દો. We once again welcome you all to this workshop. ટાઉનશીપ્સમાં કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શન અપનાવવાની દિશામાં આપણે મહત્વનું માર્ગદર્શન આજે આ વર્કશોપ દ્વારા મેળવવાના છીએ. ત્યારે આવો સૌપ્રથમ આ દિશામાં આપણને પ્રેરિત કરવા અને માર્ગદર્શન આપવા માટે વિનંતી કરીએ માનનીય ચીફ સેક્રેટરી ડોક્ટર જે.એન. સિંઘને.
dear colleague Rajiv, Yuvendra, collectors from I believe 15 plus districts, I see good number of you, administrators from the various townships who are here, welcome all of you to the technical session. GNFC in Bharuch has given a welcome lead in coming up with the cashless system in the township. It's a model with the standard operating procedures, as you will see now, is, let me put it, relatively easy to replicate. Why? Because it's a controlled environment. If the managing director of the company and if the concerned district authority headed by the collector wants to do it, they can do it. Because here, who is the one giving shops to the people? It's the authority. It's the township authority. Who is the one giving licenses? Who is the one giving rental basis to the shops? Once again, the township authorities. And the district administration has got equally good leverage, strong leverage on that. So it's possible. Unlike in other areas where we are left totally to freedom of the people, of the shopkeepers, this is a controlled environment where it can be done much earlier than which can be done in many other areas. So take all steps in replicating that. The booklet, I don't know whether you have looked into it closely or not, because most of you have been given. On the last page, it is given, look at it, replicability across the country. So India has about 5,000 townships with a population of 3.5 crores, and Gujarat has about 180 townships with a population of 5 lakhs. It's not easy, let me put it, what I said, relatively easy. But these are the low-hanging fruits which you must try to do, and do it. For example, if Surat collector wants to do it in the free area of Surat, open area of Surat, it may be difficult. It would be not that easy. Many collectors, I remember Valsad, I remember one Navsari, which I had seen, I remember many other places, Baroda also, where they had gone ahead with some of the streets done totally cashless. But there, what you have been able to do is to provide all the facilities for the cashless. You cannot force the shopkeeper that you have to do transaction only by cashless means and you have not to accept cash. But that type of authority, that type of control you can have in this type of company townships. So please exercise that. I would like you, all the township administrators, with the strong backup support from the district authorities, with the civil control, criminal control, under IPC, CRPC, CPC, all sorts of things, and your moral authority of the district authority, much more than anything else, it's a moral authority, the moral pursuance that you can have. Try to get it implemented first. I would also like to collectors, I am telling them that please push it also in the non-township areas in whatever way it's possible. You have done good amount of cashless exposition and teaching, digital training in the vegetable markets that you had. You did a good job of that. Many of the township, as I said, you have already, at non-township areas, you have already had cashless streets, sadak wagera kiya tha.
Another tremendous innovation, Yajuvendra, has been done in the fair price shops. Throughout Gujarat, all the fair price shops are now digitally enabled to accept transaction by digital means. But what amount of transaction is actually taking place through the digital means? That's why I would like to request the collectors, and wherever the fair price shops are there in the townships also, in all the places, kindly see to it, utilize your moral authority and some sort of coercive authority also to see that at least 50% of the transactions are done through digital means. The task of leader is not as a follower. You have to lead, and when you are leading, you are pushing them in the right direction also. It's not only enabling, you have to give leadership by some semi-coercive means also. It's not that easy, but you must do that and push them in the right direction. So wherever the fair price shop transactions are taking place, now that it is digitally enabled, at least 50% should be our target that they are done by cashless means. And in the townships, after I speak, the full detailed presentation will be done. But what should be the reasonable time span for conversion in the townships? कितना होना चाहिए आप लोग बताइए? 1 month, 2 months, 1 month, 2 महीने में. अगर 2 महीने में इसमें नहीं होता तो कहाँ होगा? कोई मतलब ही नहीं है. आपकी अथॉरिटी में है, जो दुकानदार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको आप रवाना करिए, ऑटोमेटिकली विल कम बैक. रवाना कर सकते हैं ना आप. बाहर के दुकानदार को यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू हिम, बट एटलीस्ट अपने टाउनशिप वाले को तो अगर नहीं करता तो रवाना कर दीजिए. एंड हु आर द बायर्स? द बायर्स आर ऑल्सो योर पीपल. And what are they using? They are also getting, let me put it very bluntly, they are getting good salary and good salary in their bank account. So they have also got all the means. वहाँ पे कोई बहुत बड़ा परचेज, कोई कार का तो परचेज कर नहीं रहे हैं, कोई बहुत कॉस्टली परचेज कर नहीं रहे हैं. वहाँ तो they are not buying houses where some amount is in cash, some amount is in check. वहाँ तो whatever transaction is being done is 100% cash, 100% white money, and they are fully getting good amount of money there. So it's very much possible. So 1 से 2 महीने में it can be done. There is no reason why it cannot be done in 1 or 2 months. So after 2 months, I would like to once again discuss with you, and I would like to call only those officers or those townships where it has not been done. तो अगर आपको 2 महीने के बाद मुझे झेलने की इच्छा है तो kindly do not move forward in this direction. And naturally, I'll also be unhappy, you will also be unhappy in that meeting. So please see to it, tell your immediate bosses, those who are the ultimate authority in townships, in most of the private ones, that government in Gujarat is, and you have heard the Chief Minister also telling, government in Gujarat is very keen that this experiment, which we have started with GNFC Township, succeeds fully. There is no partial success in this, either this side or that side. It's something like, how many of you have heard of ODF, other than the collectors? ODF is open defecation free areas, कि जहाँ पे जाहिर माँ शौचालय माँ नहीं जाता, शौच माँ नहीं जाता, or they don't go for their daily shauch in open area. So when we declare any township or when we declare any district as ODF,
that is open defecation free, then we are also open to challenge by the press. कि they will immediately get a photograph of somebody going with lota हाथ में लेके बाहर जा रहा है. So that is the challenge that we have. So why I am telling you here? Because the minute you say that my township is 100% cashless, there will be somebody trying to utilize that cash somewhere, and then he will get a photograph the next day. या तो यार खोटा बोले छे. It is not happening. So be ready for that. That's why I'm telling. It has to be 100% there. And it is within your fullest authority that you can do that. So once again, wishing you all the best. I compliment the management of GNFC. I compliment the Niti Aayog also. And I best wishes to all of you for successful implementation of this scheme. Thank you. Thank you very much, sir, for elucidating important aspects related to cashless transactions in township. And now, let's get guidance and training in direction of becoming cashless townships by GNFC team, which is very successfully implemented in its township. We request MD GNFC Dr. Rajiv Kumar Gupta to proceed for the technical session. Friends, ladies and gentlemen, we started this drive, to be very precise, on the 27th of November, when, technically speaking, there were a lot of complexities and there were many things which we didn't know, and whatever we were doing was in the nature of experimentation. 27th November was a Sunday, we decided. And first we thought that we'll go for cashless transactions in sale of fertilizer, because GNFC is primarily a fertilizer, chemicals and petrochemicals company. We have thousands of retailers, both in Gujarat and in the whole of country. Almost 50,000 retail outlets sell GNFC fertilizer, and of them about 5,000 in Gujarat. So we decided that we'll try and equip our fertilizer retailers with POS machines. Now, when we decided this, and you remember, and most of the collectors also know, that in the end of November, availability of POS, even today, was a great issue, was a great problem. But anyhow, we were able to overcome that. And in a matter of just 4 days, we got hold of about 450 POS machines. All of these things we kept on doing simultaneously over a span of 4 to 5 days. We created an online shop on the website to enable the farmers even to order the fertilizer through online shop, online web portal. We also simultaneously created an app, a telephone app, a mobile phone app, which could be used for ordering of fertilizer. And then, of course, at that point of time, amongst the e-wallets, we had only two, Paytm and SBI Buddy. And obviously, SBI being in a state bank, we decided to use SBI Buddy. And at that point of time, SBI Buddy was having some technical issues. So all the 4 methods of fertilizer sale we adopted. And we launched our cashless sales of fertilizer on the 3rd of December, which was, I think, a Saturday. So this sale of fertilizer we kept on doing and kept on increasing the number of POS machines in various fertilizer outlets. And today, we have more than 2,000 outlets, both in Gujarat and across the whole of country, in about 4 states, 54 districts. In 4 states, 134 tehsils also we have covered, apart from covering all the 33 districts of Gujarat with 243 talukas. The rest of 6 talukas do not have fertilizer outlets. So far, till yesterday, we have benefited 185,000 farmers. 185,000, almost 2 lakh farmers have purchased fertilizer through cashless means, using all those 4 cashless means which I have enumerated. Purchased fertilizer bags, almost 19 lakh fertilizer bags, worth almost 64 crores. But at the same time, during those 4-5 days and even till today, we have continuously kept on training the farmers and the stakeholders. Because this training is not a one-time job. And when you are doing this township business,
you will realize that once you train, a person forgets. Then again you have to train him, and then hands-on training, and then practice, and then ultimately a person gets acclimatized. So this training has to go on. We train farmers, we train stakeholders, we train retailers, we train students. 500 students of ITIs we used in North Gujarat especially, and 500 students of GNFC colleges. We run MBA colleges, we run MCA college, we run degree colleges. So about 5,500 students we have in-house. So amongst them, senior 500 students we selected, and they became our torch bearers, going into villages, going into shops, going to people, house to house. And then this is how we still have been continuously training people. Avaz? गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड, जो मुख्यतः खाद का काम करता है, उन्होंने किसानों को सुविधा हो इसलिए 1000 वॉश मशीन खाद जहां बेचते हैं वहां लगाए हैं, और कुछ ही दिनों में 35,000 किसानों को 5 लाख खाद के बोरे डिजिटल भुगतान के माध्यम से कर दिए। और ये सब सिर्फ 2 हफ्ते में किया। और मजा ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में जीएनएफसी की खाद की बिक्री में 27% बढ़ोतरी हुई है। Honorable Prime Minister was speaking of figures till 18th of December. This is what he spoke in Mann Ki Baat on 25th of December. Ever since then, we've progressed both in terms of fertilizer sales and in terms of POS machines. As of now, if we compare last 2 months, December and January of this year, with December and January of last year, we have sold more than 52% of fertilizer by way of cashless means. So this means that if you, 1, provide the digital infrastructure, 2, involve people by way of continuous training, and 3, incentivize the cashless operations. All these 3 things put together, they can produce wonderful results as we got in fertilizer. Now, around the 25th of December, when Honorable Prime Minister spoke in Mann Ki Baat, we used this occasion because the whole township, the whole company was charged when the Honorable Prime Minister praised our effort. And we used this opportunity to again generate a sense of belonging in the township. And we said, okay, now fertilizer sale, now the township. So township, what we did, we made 7-8 teams. And we decided that each house of the township, 1,000 houses, each house should have at least 1 e-wallet. Whatever e-wallet they want to do, we have no objection, SBI, Buddy, Paytm, and so on and so forth. So those 7 teams and 10 days continuously they moved around the township, and the result was that around 4,000, to be precise, 3,645 downloads were done within the township of e-wallets, which means that every home had more than 2-3. We, as I said, trained 500 students, and there were some labor contractors also working within the township. Jhadu lagate the, saaf karte the. Now, those payments also we made cashless. We said, no, nothing doing. Everybody should have an account. Everybody, we will transfer money by cashless means. As I said, in case of fertilizer sale, 50 POS machines at various outlets, including the canteens. We run huge canteens because every day GNFC has incoming and outgoing 500 trucks, bringing material, taking out the finished products. GNFC township has a footfall of almost 10 to 15,000 people every day. We have 5,500 students, around 5,000 people living, and then the whole of Bharuch town nearby, it comes to the township for various reasons. Some people come for morning walk in the big garden. Some people come for the gym. Some people come for shopping because huge shopping complex, cooperative store. So the entire footfall we calculated 12,000 to 15,000 footfalls. So we decided every canteen, about 7-8 canteens, both in the head office, in township, in school, everywhere. Canteen, no money, no cash, only cashless. Similarly, all shopping establishments, all educational institutions that we run, no fee is to be taken.
even today, now we have said that even a samosa is to be taken cashless. Even a pakoda is to be taken cashless. So what Honorable Chief Secretary said, that this is a controlled environment. Here, if you give an option, people will go for a softer option initially. But when people did not have an option, then they adopted this cashless option and now they don't want to go back. We have cases, media people have taken interviews of Sachivalaya, Panwala, Barber, everybody. They go, no, we only want to be cashless because this is more profitable. That is the result of the entire exercise. 500 trucks, we said, okay, all truck drivers will only carry FASTag. FASTag. FASTag is put on the screen, on the windscreen, and the truck goes without any interruption because it is connected with the, RFID, yes. Now, we did in the first instance, 32% of trucks started carrying the FASTag. They came up with another problem. Sir, this is only applicable in case of national highway. But what about the state highways? Okay, we said yes. See how the entire market in the last 2 months has been evolving. We should notice that. Very quickly, ICICI Bank came up with a card. A card which can be used by a truck driver for swiping even at the state highways. So we said, okay, all truck owners, all our suppliers will have to purchase and give it to them. They did that. Then we said, okay, every truck, and we have a lot of chemicals which are slightly hazardous. So more than 2 people carry, they travel in a truck, apart from driver and cleaner. So almost 1,000 people coming by way of trucks, 1,000, 1,500. We have 2 huge canteens to cater to them. Now, can you expect a truck driver or a cleaner or an attendant to carry a credit card or a debit card to take his meals from the canteen? We said, no, nothing doing. In this canteen, nothing is available in cash. So the truck owners, the agencies, they were advised either to give them coupons or to give them debit cards. And many of them have preferred to give them debit cards with 500 topping or 200 topping so that they can also use that along the highway for purchasing their meals. So what point I want to generate and I want to drill to all the township administrators and the collectors here, that here we don't have an option. If you give an option, they will just revert back. Here it is a very controlled environment. Can somebody dare disobey the diktat of the cantonment board? No. Cantonment board has decided that in this township, each and everything will be cashless. And from next day, everything has to be cashless. IFCO Township, Reliance Refinery, SR Refinery, if you once decide that anything and everything in this township being transacted shall be transacted only by cashless means, nobody can dare violate that diktat, nobody can change it, and gradually people get used and then they start realizing the benefit of this. Niti Aayog, as Shri Yaduvendra Mathurji has said, Niti Aayog called us, we made a presentation before the Secretaries of Government of India, and all of them have accepted this model as doable and implementable, and Honorable Chief Minister also said that now we are going to start it. GNFC Cashless Township was launched by Honorable Chief Minister on 13th, and it has been a great success there. Even today, I think the press people, my friends from press are not here now, are they? You are there. Even the press people went there in the evening, in the night, and I was relating a very small incident to Honorable Chief Secretary. That just before, 2 days before the township was to be launched by Honorable Chief Minister, a very known channel, national channel, the reporter of that channel went to an ice cream parlor at 9 o'clock in the night when the township was about to be closed. And he asked for an ice cream. He took the ice cream, ripped off the wrapper, started eating it, and when he was halfway through, he offered a 100 rupees note to the township, that fellow who was selling the ice cream. He said, no, we don't take cash here, sir. He said, I don't have anything. You want to take the money? You just take this. He said, no, sir. Either you give me by cashless means or you come back tomorrow and give it back to me. I will not take cash. So that is the kind of
military discipline that we have to generate. I am using this word military discipline. Once that military discipline is percolated down in the vendors and in the township residents, in a matter of just 10 or 15 days, they will realize the difference, that their lives have been made very easy. And now, we have conducted a survey. We have conducted 2 surveys. One survey we conducted, sir, we asked the township residents, all township residents, we gave them a form. That, okay, you are doing cashless transactions within the township, but when you go to Bharuch city, you go to Mumbai, Ahmedabad, do you remain cashless? 57% of township residents, they gave in writing that we remain cashless even when we go out. And now that is the message. That is the message. Because these township residents, these cantonment board residents, they can become torchbearers and give further rippling effect to nearby towns and big cities. Secondly, another survey is right now going on, is being conducted by PwC, PricewaterhouseCoopers, and some preliminary findings have come. That now parents, they are giving, so there is a hybrid card. As I was saying, that the market has been developing very fast. Now some hybrid cards have come in the market. What is a hybrid card? A hybrid card is both an e-wallet as well as a debit card. So what happens, you download the application on your phone, you have an e-wallet, like a usual e-wallet, but at the same time that e-wallet is connected with the debit card. Now this is a market innovation. First a company known as Zeta brought it. Now this is extraordinary. The reason is very simple, that father downloads it on his mobile and gives the debit card to his son. And he goes and purchases samosa, pakoda or whatever. And sometimes the children have some bad habits also. A child can purchase tobacco, cigarette. Now father will know what his son is purchasing. So the parents in that survey which is going on right now by PricewaterhouseCoopers have testified that these cashless means have given us a very positive means of parental control over our children. So these are benefits. The Sachivalaya said, and Honorable Prime Minister repeated this in the Parliament for almost 3.5 minutes. We'll show you that clipping. That now, the Sachivalaya used to say earlier, I used to give a bill of 54 rupees. શાક વાળો મને બેનને કહે કે આ 54 રૂપિયા થયા તો બેન 50 રૂપિયાની નોટ લાપીને એમ કહે કે આ 50 તો ચાલશે 105 રૂપિયાનું બિલ હોય તો બેન કહે 100 રૂપિયા ચાલશે સાહેબ કેવી રીતે ના પાડી દે આ બેન તો દરરોજ એને ત્યાંથી શાક લે છે એટલે એમ કરી કરીને 800 થી 1000 રૂપિયા દર મહિને આ માણસ ગુમાવતો હતો તો હવે શાકવાળો એમ કહે છે કે સાહેબ આ કેશલેસ મને વધારે ફાવે છે મારી નુકસાની બંધ થઈ ગઈ. So these are unintended, unplanned, but multi-dimensional benefits of cashless transactions that we have been witnessing in our township. How we started? I mean, we started in a matter of 4 days. We never documented. But when we look back, we started documenting. We had a mission. Our mission was 100% cashless transaction. And our goal was, we achieved this in the whole of township in a matter of 10 days, like we did in case of fertilizer sale in a matter of week time. We had challenges, huge challenges. POS machines were not able, people were not able to, even my retailers, they were not ready. Even my company officers, they were not ready. We had huge resistance, we had HR issues. Why you want to do it? This is a traditional fertilizer company. Why you want to introduce this? We had a lot of technology options, very limited good options. We had to do a lot of business process engineering. Because in case of fertilizer sale, there's a multi-layer fertilizer sale network. First, the truck of fertilizer starts from the company. It is booked in the name of the wholesaler, Gujko Masol, GFDA, Gujarat Fertilizer Dealer Association. Then it goes to the retailer. So there is another invoicing. Now cashless, if you are making, you are simply para-dropping the fertilizer at the retailer's outlet. All in between categories, they go away. Now, if you don't take care of them, they will make it sure that your entire drive is made unsuccessful. So we had to take care of in-between agencies also. We assuaged them. We told them, look, we'll take care. You were getting 2%, still you will get 0.75%. So this is how we were able to take care of
stakeholders, and at the same time, within the company also, accounting procedures have been very traditional. Because we are making invoice in favor of Gujko Masol. Now the invoice, now what is the proof of transaction? The proof of transaction is only a slip. And based on that proof of transaction, my accountant sitting in the HO will have to certify, yes, so much of fertilizer has been sold. So we had to reprocess the entire accounting procedure within the company also, and it's not easy. We had a lot of resistance, but we were able to do. Infrastructure, as I said, we provided. Stakeholders engagement, we did multi-dimensional stakeholder engagement, and then we started the mass campaign, as I said, both in case of township and in case of fertilizer sale. Training, massive training still ongoing, and incentivizing. Because without incentive, I used to remember a small story my father used to tell when I was a child, that how we started drinking tea. Tea is not an Indian beverage. So what the English people used to do, they used to give a cup of tea and 1 anna. You drink and take 1 anna. So ultimately it is an economic incentive which works in changing habits. That is the fundamental human nature. If you don't incentivize, people will not change their habits. So we had to incentivize it. We had to take care of initial resistance of people. We incentivized it. And of course, support, hand-holding, monitoring. Yes, again, this point I would like to tell all the township administrators. Some of the townships have started doing work. ONGC township, for that matter, in Bharuch. SR township, for that matter, in Surat. Good infrastructure has been provided. Some training has also been done. Some money is also being credited by way of e-wallet. But ladies and gentlemen, monitoring is very, very important. Every day you have to take the figures. Every day you have to go to every shop. Every day you have to see whether the transactions are by way of cash. I wouldn't name, but yes, when I got this news, I got a reality check in these townships. Cash is still being taken openly. Now, cash, we have to stop. And now, as I said, my shopkeeper, my ice cream seller in GNSC township, he himself says, कि पैसे नहीं देने हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम लेंगे तो यहाँ cashless लेंगे. So that kind of a thing can come within a matter of 15 days or 30 days. If you implement this with full force, full direction, and full control, without monitoring and control. Now, when I was making this presentation, Yaduvendra Mathur was not there on that day, on 8th of February. CEO of Niti Aayog, Mr. Amitabh Kant, made a very personal remark. He said, look, you were able to do because you drove the entire agenda. So I personally see that the CEO of the company and the management of that company has an important role. Herein comes the role of collectors. That whatever may be 20-30% gap in the management's side can be made good by the collectors. What Honorable Chief Secretary said, that once collectors take up, you have no option. SR has done it, ONGC has done it, infrastructure has been given, training has been given. The only thing that Collector Surat and Collector Bharuch have to do, that nothing doing. Now once you have given the infrastructure, you have given the training, you have done it, now no cash. So that kind of a support, hand-holding, direction, regimentation, that military discipline has to be provided by the collectors, and collectors can easily do it. You've done it beautifully in case of all programs in the last 2 months that we have been involving, including the Mega Job Fair. So this vision and all we have already spoken. I think, Pankaj, you must come now and start that set. Challenges also I have spoken. All these technology options, like Mr. Yaduvendra Mathur said in his private address also to the collectors, that we should go in for all options, not only one option. The client may adopt any e-wallet, anything that he wants. Yes, Bheem is cost-free. So we must promote Bheem more than others. But if somebody wants to use any other option, we can't say no to that. Come here. Now Mr. Pankaj Gupta will say a few things which we need to know regarding the e-transactions. Thank you, sir. Thank you, sir. We thank Honorable Chief Secretary for being with us today and guiding us and providing insight on the subject. And now over to Mr. Pankaj.
Thank you very much, and let me continue and take this forward. So as was discussed, point of sales are the most popular mechanism for cashless transactions. And the POS devices, as everybody knows, accepts credit card, debit cards, but more importantly, prepayment cards, which prepayment instruments that have also come in the market. And here I want to relate a story of Gandhinagar Township, that when we were campaigning in the township, shopkeepers as well as housewives came in and said, हमारे बच्चे क्या करेंगे? जो बच्चे नोटबुक खरीदने जाते हैं 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, उनको हम ना डेबिट कार्ड दे सकते हैं ना क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, उन्हें तो हम कैश ही देते हैं. So do you want our children not to buy? Or shopkeeper said, do you want our sales to come down? And that is when we interacted with banks, and they said we can give you prepaid cards with a validity, with a top up of 50 rupees or 100 rupees or whatever it is. And those prepaid instruments became popular because the same thing happened with sweepers, say, casual laborers that the contractors were employing. They said, हम इनको थोड़ी कोई 500 रुपए, 1000 रुपए दे देंगे. So that we said 50 rupees का top up in a card दे दीजिए and keep doing it whenever you want to do. That is how it happened. The second issue with POS devices was about auditing and transaction recording. And every transaction in POS definitely has a unique transaction ID which was recorded on the invoices, because GNFC is a government company and we are open to audits. So all invoicing had to be collated, and that transaction ID was unique, which was used. Third thing was, not every shopkeeper had a telephone. And I'm sure most of you know, but let me just reiterate. POS devices there are two models. One is telephone line connected and the other is SIM driven GPRS. Now, some people have misconception कि कुछ banks के POS devices free मिलते हैं. Let me clarify. Devices that are given by banks, so-called free devices, actually incur a telephone line cost to the shopkeeper. और जो GPRS बेस्ड है उसका बैंक भी और नॉन बैंक भी पैसे लेते हैं, बिकॉज GPRS सिम का कॉस्ट ही 150 रुपए पर मंथ आता है. बट GPRS वॉज बेटर बिकॉज इट इज लाइट, इट इज मोबाइल, इट कैन वर्क एनीवेयर, and this is a size that I'm showing you. This is a kind of POS device that's there. But more importantly, and this is another reason why we could succeed, and as was said by our Honorable MD, that POS devices are in short supply in the country even today. You can't get it, but let me bet it, if you want 5,000 devices tomorrow morning, I will give you. We have sourced 5,000 devices, 50,000 devices. I'm ready to take a week's target and deliver it to you. And the best part, banks are insisting on giving POS only if retailers have current account with them. I'm repeating the words. Banks will give free POS only to retailers who have not savings, current account with their banks. Because the business of bank is enjoying money on float. आप जब कार्ड स्वाइप करते हैं, आपके पैसे तो जब कटेंगे, बट रिटेलर का जो पैसा है वो बैंक 2 दिन बाद 3 दिन बाद ट्रांसफर करता है. They enjoy that float, and collectively across the country the float could run into thousands of crores. So that is their money. When we are talking of an open POS meaning हमें कोई अकाउंट नहीं चाहिए. जहां आपका अकाउंट है, सेविंग्स है या करंट है, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम POS में लिंक कर देंगे. 8 घंटे के अंदर money will be remitted to your account. And this was the reason why we could succeed with POS machines in our township and with 2,200 retailers in rural areas. गांव में जहां फर्टिलाइजर और किसान काम करते थे, वो लोग इसीलिए तैयार हुए. रिटेलर्स तैयार नहीं थे अपना अकाउंट बदलने के लिए. उनका 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, 10,000 रुपए कमाते होंगे, 5,000 रुपए कमाते होंगे, कहां 10 बैंक अकाउंट्स खोलेंगे. सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यू शुड टॉक अबाउट ओपन POS machines, non-captive POS machines which are on GPRS. सेकेंड मिसकंसेप्शन था, और ये भारत सरकार ने अनाउंस करा था, जो सब लोगों को पता होगा, कि 31 दिसंबर तक तो डेबिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन चार्जेस 0 थे, जो काफी रिटेलर्स मिसगाइड कर रहे थे. बैंक्स भी बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं कह रहे थे. बट 31 दिसंबर 2016 तक तो भारत सरकार ने, नीति आयोग ने डिक्लेयर किया था कि 0 है. उसके बाद फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और हमारे को जो बताया गया है, वो नीति आयोग ने भी कहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड पे 1,000 रुपए के ट्रांजैक्शन तक सिर्फ 0.25% लगता है, 1.5 या 2% नहीं लगता है. 1.5 या 2% सिर्फ
क्रेडिट कार्ड्स पे लगता है, और क्रेडिट कार्ड ज्यादातर हिंदुस्तानियों के पास नहीं होते. क्रेडिट कार्ड इज अ लग्जरी आइटम. You are taking credit, you are borrowing money, so that the charges are higher. So the transaction charges are 0.25% for below 1,000 rupees, 0.5 for transactions between 1,000 and 2,000, and 1% if it is more than 2,000. Bheem, Bharat Interface for Money. Now I am sure we have we have given free Wi-Fi, and some of you would have downloaded that application. Because I wanted to take 5 minutes to run you through this Bheem application, and thanks to Bharat Sarkar and Niti Aayog कि ये Bheem application ने बहुत सारे misconception, transaction charges लगते हैं, डेबिट में 0.25 तो लगता ही है, बाकी सारे वैलेट्स में बहुत सारा लगता है. Bheem is zero cost transaction. Bheem अगर आपका बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो आप बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं दूसरे बैंक को. So let me show you how it works. Bheem is an open application available for Android phones. You can go to Play Store, download it, open it. You can choose the language you want to. उसके बाद सबसे पहले वो वैलिडेट करता है, आपका मोबाइल नंबर मांगता है. आप मोबाइल नंबर दीजिए, वो आपको एक ओटीपी भेजेगा और वेरीफाई कर देगा. अब कब वेरीफाई करेगा? जिस अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर है और उसी मोबाइल नंबर से अगर आप ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं तब ये वेरीफाई हो जाएगा. एंड देन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, लोग साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के बारे में वरीड हैं कि भाई आर दिस ट्रांजेक्शन सेफ, कैन आई यूज इट? द आंसर इज यस. भीम ने ये भी इनोवेशन डाला है कि उसमें एक रजिस्ट्रेशन पास कोड है. इज डिफरेंट फ्रॉम योर 6 डिजिट पिन नंबर जो आता है. ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक पिन डालना है, तो डबल लेवल ऑथेंटिकेशन है, रादर 3 लेवल का. अगर आपने अपने मोबाइल पे कोई पासवर्ड लगा रखा है तो मोबाइल का पासवर्ड लेवल 1 है, लेवल 2 ये भीम का है जो रजिस्ट्रेशन पास कोड है, और लेवल 3 जो है ट्रांजैक्शन पास कोड है. तो 3 लेवल का अगर कोई ब्रेक करता है देन आई थिंक ही शुड बी अलाउड टू डू समथिंग. 3 लेवल का ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है. सो रजिस्ट्रेशन पास कोड आ जाता है, और रजिस्ट्रेशन पासकोड आने के बाद ये कंफर्म दैट एंड दैट्स इट. उसके बाद यू गेट ऑल दी ऑप्शंस फॉर ऑल द बैंक, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ भीम. भीम में आपके 4 बैंक्स में 4 अकाउंट्स हैं और चारों में सेम मोबाइल नंबर है, तो आप 4 अकाउंट्स चूज कर सकते हैं. 10 हैं 10 करिए, 1 है 1 करिए, जो करना है आप करिए. तो आप अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक सिलेक्ट किया तो मेरा account ending with 0992 had this mobile number, so it's showing me what is that account and which is that account. It's savings account. Okay. अब तीसरे लेवल का जो वेरिफिकेशन मैंने बताया, यूपीआई पिन आपको सेट करना पड़ता है, जो ट्रांजैक्शन पिन है. ट्रांजैक्शन पिन में आपको जो डेबिट कार्ड मिला है उसके 6 डिजिट्स आपको लगाने हैं और उसका वैलिडेशन डेट डालना है. द सिस्टम विल कम बैक, send you again an OTP, you validate that, and now your PIN is set. So this is the third level of security that you have. This is one time exercise, ये आपको बार बार नहीं करना है, और उसके बाद अगर आपको दोबारा चेंज करना है तो you can always change, otherwise you are good to go. ठीक है? Now I am on to Bheem usage. So what can I do? 3 things. Send money to somebody, request somebody to pay me money, और आजकल उसके अंदर QR कोड भी आ गया है. मैं QR कोड डाउनलोड करके अपनी शॉप पे लगा दूंगा. पीपल कैन स्कैन दैट QR कोड एंड पे मी दैट मनी. सो उनको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है. सो आई विल शो यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू सेंड मनी. क्लिक सेंड मनी. इट विल आस्क यू किसको, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अमाउंट डालिए, एंड दैट्स इट. और सॉरी, आपका पिन, ट्रांजैक्शन पिन. बिकॉज मोबाइल किसी के हाथ में चला गया तो पहले वो उसका फोन का लॉक काम करेगा, लॉक उसे अनलॉक करना है, भीम का एप्लीकेशन खोलना है, और थर्ड ये ट्रांजैक्शन आईडी डालना है. दिस इज द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम. एंड द मनी इज सेंट, एंड द मोमेंट मनी इज सेंट, बोथ द रिसीवर एंड द प्रोवाइडर गेट्स द ट्रांजैक्शन. और बाद में उसे ट्रांजैक्शन देखना है, अभी पेंडिंग दिखा रहा है ये, इट टेक्स सम सेकेंड्स. वो दिखा दिया उसने ₹1 का ट्रांजैक्शन, एंड इट्स पे. बहुत कम सबके पास बहुत कम. हाँ जी सर, वो तो 2000-3000 वाले भी आ रहे हैं. हाँ जी ठीक है.
So this is the screen. You saw those transactions. So when I click on transaction, I can see list of all the transactions and to people I have made. So you get your passbook online. And this is the QR code that I'm referring to, which is also available for download. जिन shopkeepers को अपने download करके लगाना है, they can do it. They can do a setup pin, and that's it. Now the beauty is, भीम के लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इंटरनेट चाहिए या वाईफाई चाहिए. एंड दिस वाज अनदर इनोवेशन वी डिड एट जीएनएफसी कि जीएनएफसी टाउनशिप में जब हम ई वॉलेट की बात कर रहे थे या भीम की बात कर रहे थे, पीपल सेड व्हाई शुड वी स्पेंड आवर डेटा. सो एज एन इंसेंटिव जीएनएफसी डिसाइडेड एंड gave public free Wi-Fi in the entire shopping center, which was open to everybody. This was also repeated at all the retail outlets. This was an incentive. छोटा सा cost है. It was a very negligible cost for organization, but free Wi-Fi was overcoming a मैं आ रहा हूँ. वही बिल्कुल वही बता रहा हूँ. हेलो. हाँ, नहीं देखिए, ये वाईफाई की जो बात है, ये टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेटर्स को मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, वाईफाई जो भी आपका मेन स्ट्रीट है या मेन आपका शॉपिंग एरिया है, अगर आप वहाँ वाईफाई लगवा देंगे, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होती है, वो करवाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज देन फोन्स वर्क वेरी फास्ट बाय ई वॉलेट्स एंड ऑल. सो एवरी टाउनशिप कैन डू दैट. एक्चुअली इट्स नॉट वेरी बिग, वो टाउनशिप के खर्चे में ही डाल के उसको करवाना पड़ेगा. बिकॉज हमने सबसे पहला काम ये किया, बिफोर वी स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग, वी सेड कि नो, वी हैव टू हैव अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी. तो भले 4G हो कुछ टाउनशिप्स में, लेकिन वाईफाई चाहिए होता है फॉर बेटर बैंडविड्थ एंड बेटर डाउनलोडिंग ऑफ दीज एप्लीकेशंस. So this is some very, very important SOP. Actually, these are all SOPs which we are enumerating to you. वाईफाई देना और देना ही है, उसके बिना फिर ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं बनेगा. तो जैसा मैंने बताया, भीम के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे. तो भारत सरकार ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस बनाया है. दिस इज *99#. आप लोग अगर अपने मोबाइल से डायल करेंगे, सो दिस वर्क्स ऑन अ नॉर्मल नोकिया 1100 या छोटा सा जो डिवाइस आता है 500,000 रुपए का, जिसमें सिर्फ SMS आते हैं और बात होती है, उस फोन से भी ये काम हो सकता है. नाउ इट इज पर्टिनेंट टू पॉइंट आउट कि स्मार्टफोन पे भी ये काम करता है. ऐसा नहीं है कि ये स्मार्टफोन पे काम नहीं करेगा. तो भीम और *99# दो चैनल्स हैं एक ही मॉडल के. आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, जो मोबाइल नंबर उससे एक्सेस होगा. तो आप ये देखिए कि जैसे मैंने *99# किया, नीचे बॉटम लाइन में आ रहा है वेलकम टू #99#. एंड द मोमेंट आई शो यू दिस, यू गेट 7 ऑप्शंस: सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शंस एंड यूपीआई पिन. नाउ जस्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीआई पिन अगर आपने भीम में सेट कर दिया है तो सेम पिन इसमें काम करता है. इसमें अगर सेट कर दिया है तो सेम पिन भीम में काम करता है. दोनों के एक ही पिन है, 2 बार सेट नहीं करना है. दीज आर 2 डिफरेंट चैनल्स टू द सेम अकाउंट, राइट. अब हम इसके पेमेंट मोड्स देखें आपके. दोनों में काम करते हैं. इज द सेम चैनल. There is a committee set up and Secretary DFS is looking at it. One of the challenges is more than one bank account we have unconsciously linked with the same phone number. See, many of us have more than one bank accounts. So we give the same phone number to that bank and the other bank. Now that will cause a problem. So the trouble will be that we'll have to go back and get other bank accounts which we are not using with this, that we have to get delinked. That is the reason why it's very frustrating also कि अरे वो तो नहीं work हो रहा.
But the beauty, as I said, transaction charges zero hain. You don't pay anybody anything, neither the retailer nor the buyer. So it's worth the pain. And let me share कि हाँ, November में, December में pains थे. But now we have tested, it's working better. So मैं दोबारा से *99# को just play कर रहा हूँ कि you dial *99#, you get 7 options to look at your account. I'll select the first option, which is sending money. Sending money में you can send money through 7 options again. आपको जब पैसा किसी को देना है, तो आपने जब कहा सेंड मनी, तो आपके पास ऑप्शंस हैं. आप सामने वाले से आप मोबाइल नंबर मांग लें. अगर उसने मोबाइल नंबर दे दिया, आप मोबाइल नंबर टाइप करिए, पेमेंट गोस. या उसका आधार नंबर ले लीजिए अगर वो देता है तो, या उसका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ले लीजिए. आई विल कम टू ईच ऑफ देम. या उसका बेनिफिशियरी ले लीजिए, आईएफएससी नंबर ले लीजिए, या एमएमआईडी ले लीजिए. इन 6 में से कोई भी एक चीज आपको मिल जाएगी. यू कैन टाइप दैट. हम मोबाइल नंबर ले रहे हैं, नाम आ गया, अमाउंट डालिए एंड पे. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसकी 4 स्टेप्स का ये पेमेंट मैकेनिज्म है. इट्स वेरी इजी. हाँ, देयर आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, देन पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड. बस but please trust me, it gives you a very good experience once you are used to it. Then you start, in fact you can check my wallet, I may not even have more than 500 rupees and I don't carry them. So ये इस तरह से पिन. अच्छा, और बाद में वेरिफिकेशन के लिए जो मैंने आपको पिन बताया था, वो पिन मांगता है, बिकॉज आपका मोबाइल किसी और के पास चला गया तो भी वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा जब तक आप अपना पिन नहीं डालेंगे. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके. And MMID is also there. MMID is required when you are doing mobile identification. This is the third one, SBI Buddy, which is e-wallet, which is popular. Something like Paytm, but we chose SBI Buddy because even if I have to pay transaction charges, anyway, Government of India gets it, I'm not giving to somebody else. तो हम लोगों ने SBI Buddy के साथ काम किया. ये भी free app है, wallet है, exactly the way other wallets work. और इसके अंदर beautiful portion ये है कि आपका जितना भी बैलेंस है, यू कैन रेमिट इट टू योर अकाउंट एनी टाइम एंड इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हम लोगों ने चेक किया है. बाकी वॉलेट्स में जब आप पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उस वक्त भी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं. एसबीआई के अंदर अभी ये फीचर, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दे कंटिन्यू, बट दे विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग if you remit it back to your, because let me share an example. E-wallet, we use it for taxis, Olas and Merus. So you always have 500 to 700, 800 rupees in your wallet. You don't use it for a month. And if there are 1 crore people not using it for a month, it's 1,000 crores. That's the kind of float that this wallet companies are making. I'm not criticizing them. All I'm saying is this wallet money which is there is linked with your account. You remit it to your account. You pull in only when you need. This is the functionality that you have. You have heard Mr. Amitabh Kant once very openly said that, the future of wallet companies is downward. Going down. So there is no future of wallet business. So *99# is the mantra. Just get everybody to enter through the *99# mantra. Don't create this artificial divide कि तुम स्मार्टफोन वाले हो तो तुम ये ऐप डाउनलोड कर लो, और तुम तो बेकार वाले हो, तुम्हारे पास बहुत खराब फोन है, तो तुम तो ये *99 करो. *99# is the gateway. So let everybody enter the gateway through *99#. Yes, sir. Let in the training technology put that ahead. So everybody starts using *99#. Then you are not going anyway, whether you're talking of Buddy or you're talking, there are 30 apps of 30 banks, all commercial banks are pushing their own wallets. So it's a mess, it will become too complicated and the forces will not align. You get everybody to use *99#. Now their bank will be they will send to you or me or anybody through who will have some other bank. No problem. *99# is great. So let that language take on. So when you advertise that please download this and that, I would suggest just advertise *99# and stop talking कि smartphone वाले तो ये higher category के लोग हैं और ये lower वाले हैं वो करते हैं. So that is as good. Once he graduates, once he is sophisticated, obviously he will download an app and do more advanced application. Yeah. So let me take you through SBI Buddy. Again, Android पे available है, English language. What they ask is a mobile number, your email address, name, date of birth as a security this thing, and then take you to the next screen, which is
again select a PIN. You have to choose your PIN. Once you're selected, you get 4 options. Add money. Now this is a beautiful part. So what I do now is not store any money in my wallet. I have SBI Buddy. I don't store even a paisa in that Buddy. जब भी मुझे उस Buddy को यूज करना है, मेरा अकाउंट लिंक्ड है, मैं उस वक्त ऐड मनी करता हूं, जितना करना है मुझे, सेंड मनी करता हूं. So money is always in my account. I pull into the wallet when I need it to use it, used, so my wallet is always free. So even with State Bank of India, I don't give them my money. Anyway, it lies with them. So that's the beauty of it. You can ask for it and you can do all the functionalities that you want to do. And this is what it gives you a list of all the transactions, my payment request, my preferences. So a typical mobile application is available with you. When you want to add money, I'm showing you how to add money. You add money either through net banking or debit card. This is what I said. So मेरे account में पैसे हैं, I just use my net banking, or if I have debit card, I use my debit card to add the money, send money to whom, and if I have to ask money, I ask the money. Now that was on UPI, Bheem, and SBI Buddy. The fourth one, which is very popular, increasingly popular, especially with people who are not very literate, who are not very conversant with usage of mobile phone numbers and all those things, उनके लिए आधार enabled payment system आया है. इसकी पहली requisite है कि आधार नंबर को आपको अकाउंट के साथ लिंक कराना पड़ेगा, जो काफी लोगों में, हम लोगों में से काफी लोगों ने शायद नहीं कराया था, without realizing that it may be required in future. So Aadhaar number linking with bank account, both for the payee and the receiver, customer and seller, दोनों के पास आधार नंबर लिंकिंग होना जरूरी है अपने अकाउंट में. आधार डेटा इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन. कस्टमर किसे पे करता है? कस्टमर शॉपकीपर को पे करता है. एंड हु इज अ शॉपकीपर? शॉपकीपर इज अ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, इज एन अथोराइज्ड बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हु हैज अ पॉस मशीन जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है. Again, there is some short supply, but this is supply constraints are getting removed, and they uses basic banking service through point of sale. So जैसे हम कार्ड स्वाइप करते हैं, कार्ड में हमें OTP आता है. मैंने आपको SBI ये *99# में आप MPIN डालते हैं. आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आप अपना बायोमेट्रिक देते हैं. जो बायोमेट्रिक आपके जिस अकाउंट से लिंक्ड है, उस अकाउंट से पेमेंट डेबिट हो जाएगा. So that is a small process I've said. Go to the banking correspondent or the shop, provide your bank number and Aadhaar, choose what transaction to do, provides finger scan, successful transaction slip aa jayegi, the process is complete. This is very secured for people who are not very comfortable using numbers. Now, this were the technology options we had. And the challenge, as was said in the earlier sessions, business process reengineering was very important. Because please appreciate, and this was another reason we had resistance. शॉपकीपर ने कहा मेरे पास पैसा SBI बडी से आएगा, पॉस मशीन से आएगा, पॉस मशीन में डेबिट, क्रेडिट एंड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से आएगा, मेरे पास *99# से आएगा, मेरे पास किसी और 8 मैकेनिज्म से पैसा आएगा, मैं शाम को अपना टैली कैसे करूंगा? And he was really a small shopkeeper who is not very literate, was confused, and hence we created templates. We trained, we had a training team sitting there, helping them count their cash and reconcile their money that they received at the end of the day. जिनको ऑडिट करना था, इनवॉइसेस बनाते, उनको भी हेल्प किया, उनको भी हमने गाइड किया. वी ऑल्सो टुक फाइनेंस इनटू कॉन्फिडेंस, बिकॉज फाइनेंस सेड नहीं, हमें तो ये एक सिंगल शीट में चाहिए. इफ देयर आर 7 sources of income, 7 modes of income, how do I reconcile, how do I capture them, how do I control was important issue. So we identified business rules कौन से impact हुए हैं, accounting procedures were amended, validations and cross validation had to be done. Negotiations with banks was the most challenging one. जैसा मैंने आपको बताया कि banks have their own business, they have a cost of POS machine, they have their targets of opening accounts, they have, objective of retaining your money to enjoy the float, they have all kinds of targets which was parallelly running in. And hence we had tough time negotiating with banks, how to do, what to do, and what, so T+8 hours is what I told you, is the best we could negotiate, because छोटा shopkeeper 2 दिन भी पैसे का wait नहीं करता है, because सब्जी वाले को तो next day पैसा चाहिए, because he has to bring in his goods. So that is another challenge we had. And the most important, and this I must share with you, हमारे managing director साहब ने जो है initiative लिया,
And I recall in the first 4 days, we were on the calls till 1:30 in the evening. Because what was happening is, every time, somebody will come up and say, sir, मेरा वो 15 रुपए काट लिया, 20 रुपए काट लिया, मेरा पैसा नहीं आया मेरे अकाउंट में. Because of sudden spurt in transactions, because of the drive, telecom infrastructure, banking infrastructure, connectivity infrastructure, challenges आ गए, because India never experienced that kind of a spurt in volumes. So कुछ transactions में difficulty आ रही थी. And they were threatening our program. They were threatening. They said, sir, हम नहीं करेंगे. मेरा 100 रुपया लॉस हो गया. सब्जी वाला बोलता है, सर 500 में 100 लॉस हो गया. How do I do it? So I call him up at 11:30 and say, sir, ये तो problem है. He asked me, what do you want me to do? I said, sir, उसको 100 रुपए दे दो. He said, done. And he issued instructions at 12 midnight to everybody on WhatsApp कि जिसका भी है, underwrite their financial risk. Of course, he put some ceiling which was very high, fairly high ceiling. Sir, you would like to share that? देखिए, ये एक टोटली अननोन फील्ड था. जब मैं भारत सरकार में गया और मैंने बताया, मैंने कहा साहब देखिए, इसमें ट्रांजैक्शंस खोते भी हैं. आज की तारीख में आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे करते हैं तो कई बार ट्रांजैक्शन खो जाते हैं. वो पैसा जाता नहीं है, वो पैसा लोकेट होता है, उसको लोकेटर डालना पड़ता है. 10, 12, 15 दिन के अंदर वो लोकेट होता है, फिर आता है अकाउंट में. एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक इंस्टेंस दूं. एक रिटेलर के यहां से एक खेडूत ने सुरेंद्रनगर के एक गांव में, ठीक है, खातर की थैली खरीदी 12,000 रुपए की और वो पेमेंट किया. वो पहली बार में कार्ड चल गया, पेमेंट उसका डेबिट हो गया, लेकिन वो स्लिप पे ट्रांजैक्शन नहीं आया. तो कहा ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया. उसने दोबारा किया, दोबारा वो ट्रांजैक्शन हो गया और दोबारा उसका पैसा कट गया. अब आप ये देखिए कि लोग कितने कॉन्शियस हैं. वो खेडूत लेके चला गया, जब उसके पास बैंक का स्टेटमेंट या जो भी मोबाइल पे उसके मैसेज आया कि साहब 2 बार हो गया है. ही वेंट टू द रिटेलर. रिटेलर वाज आल्सो टेक सेवी. ही ट्वीटेड ऑन माय ट्विटर हैंडल कि आप ये सब लेके घूम रहे हैं और ये तो मेरा 12,000 रुपए का अभी आपके आदमियों ने काम नहीं सुलटाया. तो व्हाट आई टोल्ड देम, व्हाट ही इज रेफरिंग टू इन द मिडल ऑफ नाइट, I said, we'll underwrite the risk. If we are taking a campaign, we also take upon ourselves the moral responsibility for any losses, whether notional or actual. देखिए, एक्चुअल लॉस कभी नहीं होता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में. देर होती है, लोगों को एंग्जाइटी होती है. तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, एसआर है, गेल है, ओएनजीसी है, तो एक लोगों को कंफर्ट देना पड़ेगा, रिटेलर्स को, दूसरे आपके जो टाउनशिप के रेजिडेंट्स हैं उनको भी, कि देखिए ये डिजिटल ट्रांजैक्शन आप यूज करिए. अगर 1% कोई इसमें गड़बड़ होती है तो हम विल अंडरराइट द रिस्क. ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज में हमने कोई एक भी पैसा खर्च नहीं किया अब तक. हमने आपको बताया 1,85,000 फार्मर्स के ट्रांजैक्शंस हुए. करीब 22 या 25 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें पैसा यहां का वहां चला गया. चाका भाई का पैसा मका भाई को चला गया, मका भाई का भगा भाई को चला गया. लेकिन विद लॉट ऑफ पेशेंस एंड वी टोल्ड देम, आई ट्वीटेड दैट वेरी मोमेंट, आई सेड आई अंडरराइट योर 12,000 रिस्क, डोंट वरी, इफ यू डोंट गेट दिस मनी आई विल पे फ्रॉम माई कंपनीज अकाउंट. वी टुक अ डिसीजन. दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क एंड आई एम श्योर कि एक मार्केट इंश्योरेंस कंपनीज भी देख रही हैं. सो क्रेडिट इंश्योरेंस होता है, जैसे हम लोग भी, मैं पहले एक्सिम बैंक का चेयरमैन था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का. हम लोग यही काम करते हैं कि हम लोग जब किसी को लोन देते थे एक्सिम बैंक में, तो इंडिया से बाय करने या एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एक तरह से एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यही काम करती है, जो एक सिस्टर संस्था है. इट इज कॉल्ड क्रेडिट इंश्योरेंस. नॉर्मल हम फायर इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस, वो सब इंश्योरेंस खरीदते हैं. तो क्रेडिट का मतलब है जिसको हमने माल बेचा है वो हमको पेमेंट देगा या नहीं देगा, उसको भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक है, इट कैन बी कवर्ड. तो ये भी उसी एरिया में आ रहा है. अभी विद इन इंडिया क्रेडिट इंश्योरेंस का मार्केट डेवलप नहीं है, बट राजीव जी, आई एम श्योर जिस तरह से ये डेवलप होगा तो इंश्योरेंस कंपनीज भी वो आपको क्रेडिट पॉलिसी एक आके ऐड कर जाएंगी कि अगर आपने इस तरह का कहीं कोई क्रेडिट कोई रिस्क आपकी है, छोटे से प्रीमियम पे यू कैन ऑल्सो कवर योर क्रेडिट रिस्क. लेकिन जब तक वो होता है, देखिए हमें एक ड्राइव लेके चलना है, ठीक है, और ये सिर्फ एक नोशनल एश्योरेंस है. लेट मी एश्योर यू, GNFC has not spent even 1 rupee thus far in last 2.5 months for underwriting that risk. But it's very important
in the very beginning and in the middle also if somebody has lost his money कि भाई देखो तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, हम देंगे तुम्हारा पैसा. ये एक नोशनल एश्योरेंस है जो आपको देना पड़ेगा. देखिए आपका यूनिवर्स क्या है? आपका यूनिवर्स अपना यूनिवर्स है. आपके क्लाइंटेल कौन है? आपके रेजिडेंट्स हैं, आपके टाउनशिप के अंदर रहने वाले और बिजनेस करने वाले वेंडर्स हैं. तो उनके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, वो आपकी बात मानेंगे. और हमने तो फर्टिलाइजर के अंदर इतना बड़ा रिस्क ले लिया. हमारे तो इतने रिटेलर्स हैं, हमारे तो थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स हैं और लैक्स ऑफ फार्मर्स का. हमने कहा नहीं ठीक है, हमने एक सिद्धांत से फर्टिलाइजर को बेचना शुरू किया है जो देश में कभी नहीं बिका है कैशलेस मीन्स से. एक फार्मर ने घर बैठ के 100 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर को अपने वेब से दिया. और फिर वो कहीं इंटरव्यू दिया उसने, तो वो कहता है कि साहब ऐसा किया, मेरे को 100 बैग तो चाहिए नहीं थे. ગુજરાતીમાં કહીશ કે અમારા આજુબાજુના 3-4 ખેડૂતો ભેગા થઈને એમ નક્કી કર્યું કે તમે એક તમને આવડે છે તમે કરી દો, પછી આપણે ટ્રેક્ટર એક કરી લઈશું. એટલે એ લોકોએ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ખર્ચા બચાવ્યા કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શનથી. હું શું કહેવા માંગુ છું કે કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ રીતે ઇકોનોમિકલી ફળે છે એ આપણને અમુક વખતે તો કલ્પના પણ ના હોય. So that farmer earned because he એકલા કરીએ તો એકલા જઈને બધાએ છકડો કરવો પડે. એટલે આ 4 જણાએ ભેગા થઈને અગેન આઈ થિંક ધ ફાર્મર વોઝ ફ્રોમ સમવેર નોર્થ ગુજરાત, કે 4 જણાએ ભેગા થઈને એક ટ્રેક્ટર કરીને એને ખર્ચો બચાવી લીધો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો. એટલે આ રીતે યુ હેવ ટુ ગિવ ધેમ ફૂલ કમ્ફર્ટ કે ભાઈ ये यूज करो तुम, तुम्हारा कोई नुकसान होगा तो हम करेंगे, एंड देन ऑटोमेटिकली द होल थिंग विल पिक अप. चलिए. I think the message was the retailer was delighted with that assurance, and that is what made him more committed. So हमने इसे किया कैसे? That is what we had. Chairman of the Apex committee was our MD, and then all the heads of the department were all put into the room so that any objections, any problems, any clashes that they had in terms of processes can be reconciled. And then we had created 6 team. एक गई मार्केट में सर्वे करने के लिए जिसने रिटेलर्स से बात की, हाउस होल्ड्स पे गई, कैंपेन टीम गई जिसने कैंपेनिंग किया, क्या करना है, डाउनलोड्स कराए, ट्रेनिंग टीम्स क्रिएट करी, और ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको एक बार बता दिया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सक्सेसफुली एक्चुअली डू दैट ट्रांजैक्शन. कई बार करनी पड़ेगी ट्रेनिंग. हमने शॉपिंग सेंटर में 5 आदमियों की टीम बिठाई, रिटेलर्स के पास बिठाई. सो ट्रेनिंग टीम वाज डूइंग अ कंटिन्यूअस जॉब. इंप्लीमेंटेशन टीम जो पॉस लगा रही थी, वाईफाई लगा रही थी, एप्लीकेशन डाउनलोड करा रही थी, ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल करा रही थी. जैसे सर ने बताया ट्रांजैक्शंस कहीं लॉस नहीं हुए थे, बट देयर वाज अ नीड टू रिकंसाइल because we have all digital trails. The beauty of digital was digital trails were available, so we were very sure no transaction is going to be lost. It may take some time. Then we had hand-holding team, and the most important was MIS control. When we said, sir, we are all done 100%, his first question was, how do you say you are 100%? But that could be my wishful thinking. I had enabled and provisioned every shop. It's not 100% cashless. It's 100% provisioned. And hence we created an MIS report which was collected every day, and which I'll show you a little later. I talked about the infrastructures of POS with telephone line or GPRS, bank POS or non-captive POS is what I would recommend. Smart mobile phone with data plan is needed for e-wallets and Beam. Ordinary phone can use UPI *99#, and POS with fingerprint and scanner can use APS. Now this was important. When we started doing this exercise, हमने retailer form करा. आप लोगों को ब्रोशर दिया गया है. इस ब्रोशर के अंदर एक implementation kit है. I would request everybody to kindly open that. That will help you and give you some guidance. ये फॉर्म हमने डाला है. ये एक मल्टीपर्पज फॉर्म है रिटेलर के लिए. रिटेलर कैन बी एन इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी फर्म या पार्टनरशिप या LLP भी मिली हमें कुछ शॉप्स. सो उनका बिजनेस लीगल नेम हमें चाहिए था. तो वी क्रिएटेड अ फॉर्म बिकॉज देयर वाज ह्यूज प्रॉब्लम इन कलेक्टिंग डेटा एंड इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज पॉस डिवाइस आपको नहीं मिलेगा. पॉस के लिए आपको KYC चाहिए. बैंक नीड्स 100% श्योरिटी ऑफ हु इज ओनिंग इट एंड व्हाट अकाउंट इट विल लैंड. इवन इफ अगर मैं कह रहा हूं मैं सेविंग्स बैंक में डालना चाहता हूं, इज फाइन, बट KYC कंप्लायंस वाज नेसेसरी एंड इज नेसेसरी. तो KYC कंप्लायंस के लिए हमने बिजनेस का लीगल नेम मांगा. लीगलिटी क्या थी उसकी बिजनेस की? रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द फर्म,
District, taluka, city, pin code, landline and mobile numbers were mandatory because mobile numbers were used for verification. Verifications and OTPs डाले हैं. Business proprietor का PAN number important था because KYC compliance that needs. And then we needed their bank account details, that is the account holder's name as on check, as in the account. Because Pankaj Kumar Gupta is one name, but I run a shop called Pankaj Brothers. And if the account is in the name of Pankaj Brothers, then I better write Pankaj Brothers because ye hamari initial, out of 2,500 machines that we were trying to do, 500 plus cases we got this problem. So everybody wrote their own name, whereas the legal name was different. So it's very important that they write the account holder's name, the name of the bank, bank account number, IFSC hai ya saving hai ya current hai. As I said, we never insisted on current account and the IFSC code. So this form you should circulate to your township and retailers, mandate them that they fill it correctly. Because let me come back, transaction loss क्यों हुए थे? Transaction loss इसीलिए हुए कि they were credited to a wrong account. Banks also made some mistakes. They gave POS under pressure, under time pressure, whatever you call it, कि जो detail आया उसको उन्होंने configure करके डाल दिया. They only checked was कि account valid है कि नहीं है. Account was valid, but name clashes were there. And hence the actually amount got credited to some other account. So this is a form that I will request you all to circulate, get them digested, explain them how to get this form filled up because this is first key to success. And then there were some documents they were required to give. People didn't give documents. Cancelled copy of check ताकि IFSC code, bank code, नाम गलत नहीं होगा. We had a call center, we had a support team which was also verifying because bank said 2200 POS machine. In 4 days, we can't validate. So we provided that support to the bank saying, okay, we will verify, certify that KYC details are correct. By the way, GNFC is also a digital certificate provider in the country. So we have that capability of doing KYC compliance. And we did that. PAN card copy, copy of the business legal entity. Now that was another important thing. They were running two businesses. They attached another document and gave details of somebody else. So we had to check the business legal entity, KYC ka proof and photo ID of the shopkeeper. So these are the 5 documents which are mandatory for any shopkeeper to have a POS device. Mass campaigns, we talked about payment methods. Each user was encouraged to coach 10 users. This was specifically applicable to 5,500 school students who were trained, 500 ITI students, housewives, ladies clubs. देखिए हमारा टारगेट था कि हर यूजर 10 को कहेगा, ठीक है? अब देखिए how it actually happened in practice. I just mentioned about the PricewaterhouseCoopers survey which is going on right now. They have certified after interviewing 1,000 farmers and around 800 township residents. But actually what is happening that in case of digital transaction, if you make one person, he becomes a torchbearer for 5 persons. So he or she stimulates this kind of digital transaction thing amongst 5 more persons. So that is, that is exactly our point. That is, there are 5 lakh people staying in these townships within Gujarat alone. Those 5 lakh people can make another 25 lakh people use these digital transactions. That is most important. Brown का ये grey color में आप देख रहे हैं, providing resolutions of problem. Initially we ran 18-hour call center where any retailer or farmer or a customer could call in, and there were hundreds of problems. किसी का POS machine गिर गया, किसी का SIM card काम नहीं कर रहा है, किसी का credit card because it's old, it's not working, debit card is not working, prepaid card is not working, prepaid cards are not activated. So we got hundreds of calls. We were getting 450 calls a day at the peak of our implementation, and we had 18-hour call center in vernacular language with 20 people sitting, and this was required. Because this, the first thing was customer was given resolution instantaneously. And there was a second level of team which we have told in the brochure that it was not the front-end team call center guys handling them. We had managerial team sitting because some decisions cannot be taken by the call center guys. So वो route कर रहे थे, पीछे अलग से 20 आदमी की managers की team बैठी थी जो subject experts थे. And the success lied in, we were able to resolve 95% of the calls on the call. There were 5% calls which we could not resolve, and we had to tell them, we will revert back to you, but 95% of the calls were handled online while they were on the call. And this built the confidence, this gave them resolution,
This trained our shopkeepers. हमने FOQ बनाए. Next time we circulated, we had a WhatsApp group of shopkeepers and told them, next time when you face this problem, first check this. So the number of calls coming into our call center dropped after a week's time. So we had to train. That is why I'm saying the technical support team was very, very important, which took us to the next level. These are some of the brochures we talked about. We painted the shops with these brochures. We painted the township, and we were talking about it. And this is the snapshot of cashless cashless modes, Beam, 99#, e-wallet, POS, and AEPS. And there are 7 things, and either of these 7 that you can use it. We also insisted that all shopkeepers should put on this board. Because customer को तो 5-6 options, shopkeeper को 5-6 options of payment रखनी है. They don't know कि retailer customer क्या option लेके आएगा. So we told them they should put up that they accept cards, Beam, e-wallet, UPI and Aadhaar. And उन्होंने payment details भी लिख के रख दी. उनका मोबाइल नंबर, उनका अकाउंट नंबर, उनका IFSC नंबर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, MMID एंड द QR कोड. और इन्होंने ये फ्रंट पे लगा दिया. तो कस्टमर को जो भी मोड लेना है, if he is using wallet, he uses mobile number, if he uses Beam, he uses IFSC, whatever he wants to use. So we circulated this template to all the shopkeepers and they had pasted this. So the interaction between the customer and shopkeepers was reduced. Or errors of communication, mobile number bolne mein galti ho rahi hai, account number so they were all eliminated. And this is a standard display that we put up at all the shops that we were talking about. As we talked about, sellers and buyers were provided technology training. We were given hands-on live training was given multiple times, guiding them on maintaining the receipts from multiple payment systems. Door-to-door campaign, posters and banners, FAQs, as I said. बहुत सारे questions थे, बहुत सारी problems थी, बहुत सारे radio technology we gave that. Tailored training sessions for everybody. Employees की requirement अलग थी, housewives की, children की. As I talked about a card, prepaid card. Children said, how are we going to buy? We gave them an answer. Students at school. Detailed training for retailers was different because उनकी accounting training थी, covering various aspects. So we created interest groups and customized trainings were given to all of them. The most important, there was a cooperative society traditionally used to give 2% discount on cash. Managing director, the moment it was brought to his notice, he said 2% discount withdrawn, 2% discount on cashless. It was a reversal. In fact, then we realized, why should you give 2% discount on cash? Handling cash is a cost. Handling cash is a cost. You may end up with fake currency, you have to count, you have to store safely, you have to go and deposit in bank and withdraw. So actually, I would request that we have to press for that cash should be disincentivized by additional 2% transaction tax on it rather than, that's my personal view. देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव स्टोर है और बहुत चलता है, बहुत बढ़िया स्टोर है. Many of you have seen it yesterday and day before yesterday. Huge, I mean crores and crores of rupees turnover every year. Now, we had a scheme of giving 3% discount on cash in that cooperative store. It's run by the company cooperative. We just reversed it overnight. We said now cash is disincentivized. कैश देगा, पहले तो हम कैश लेंगे ही नहीं, अब वहां कैश मिलेगा ही नहीं. आप नॉन कैश से करेंगे तो हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे जो आपको कैश में मिलता था. तो देखिए लोगों की हैबिट्स आप कैसे बदलेंगे. आपको इकोनॉमिकली तो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उसके बिना लोग कहेंगे भाई फायदा क्या है इसका बताइए. और जब जब लोग इसको यूज करने लगेंगे उनको फायदा अपने आप समझ में आएगा. तो बहुत सारे बड़े बड़े टाउनशिप्स हैं जिनके अंदर स्टोर्स हैं, कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, कंपनी रन स्टोर्स हैं, कंपनी सपोर्टेड स्टोर्स हैं. आप नॉन कैश इंसेंटिव्स का भी कोई एक माड़खा जरूर लेके आए उसमें. कुछ भी आप 1% का दीजिए, आधे % का दीजिए, आप काइंड में दीजिए, और कुछ नहीं है. 100 रुपए की खरीदी पे एक साबुन मुफ्त दे दीजिए, जो भी देना है, लेकिन आप ये जरूर करिए तो लोगों को इसका उत्साह मिलेगा. चलिए. इनफैक्ट इन कंटिन्यूइंग विद दैट, जीएनएफसी ने अपने इंसेंटिव्स किए थे, बट नीति आयोग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ इंसेंटिव्स डिक्लेयर किए थे. एंड जस्ट टू शेयर विद यू दैट कंज्यूमर्स, there are 15,000 consumers who are eligible to win a lucky draw of 1,000 rupees each every day. Very few shopkeepers know about it.
very few customers know about it. And at the same time, there is a scheme for shopkeepers also, and there 7,000 traders tend to win these prizes every week if they do cashless transactions. And this is announced by the Government of India. We popularized this. This was also received very well. I talked about support, handholding and monitoring, vernacular language, real-time problem solution, account reconciliation, and tailored response for children, the data card. This is where, when we reported back to our MD saying, sir, hum logon ne cashless kar diya hai, the question was, how do you claim? We can't be claiming in air. And we created an MIS, he reviewed it, and this is the MIS that he monitors every day. Various shopkeepers on the first column, and then e-wallet, M-swipes, POS, UPI, Zeta, coupon, check, cash, whatever it is. Not that initial 1 week we had zero cash. There were 3-4% cases of cash, lekin wo bhi band kara. And then we started collecting how many transactions and what value. And if you look at the last, he wanted to see what percentage of transaction is cashless. And it is based on this that he accepted our stake and thereafter decided to announce it to the world, saying that we are 100% cashless. See, this was an exercise carried out over a period of 45 days. We did. Every day, we kept on reducing the percentage of cash. Cashless cannot come in just one day. Initially we started with almost 50%. But our target was 100%. And at the end of the day, like, that snake and ladders game. You reach 98, you reach 97, and then there is a big snake waiting for you at 99. That journey from 95 to 99 and 100% was most difficult and slowest. Because what was happening in GNFC Township, thousands of people come from outside. And you don't have any control on them. They just take out cash. So for that, our shopkeeper used to say, no, sorry, we don't take cash. And then gradually those people also started paying cashless. And I personally used to witness. I used to go in the middle of day, in evening, late in the evening, unannounced. I would just stand outside the shop and let the people used to buy provisions. And then used to ask them, kaise pay kar rahe ho aap? So what I'm trying to say here is that it is the township administrator's role. Now, every CEO of the company can't do the way we did it. But township administrators, each township has one administrator of the rank of either AGM or GM or manager or whatever. And whatever is falling short in terms of top level drive, our dear collectors can make good that. So why we are involving you is that 20-30% falling short in the top management's drive can be made good by the collectors. No, it has to be done. The government has taken it up. Your township has to be 100% cashless. And this cashless, this matrix is the bottom line of being and declaring cashless. And this matrix has to be monitored for a period of at least 1 month. Why I said 2 or 2.5 months in front of Chief Secretary, that 15 days, 10, 15 days, infrastructure is very easy. You can set up the infrastructure, train the people. SR has already done it. ONGC has done it. But results are highly mixed. And I got them tested through my own people. People are using धड़ल्ले से cash use हो रहा है आपके township में SR में. तो cash use नहीं होना है. और वो ये matrix है. इस matrix में जब आप देखेंगे कि 50% के ऊपर जाने लगा, तो आपको खुद मजा आने लगेगा. खुद आप enjoy करने लगेंगे इस सारी drive को. और छोटे जो शॉपकीपर्स हैं, वो समझ लेंगे कि इससे ज्यादा फायदा है. हमारा नुकसान नहीं होता. मेरे बार्बर ने मुझे क्या कहा? मेरे बार्बर ने कहा कि साहब 12-15 માણસો આવે છે, હવે મારે બેંકની લાઈનમાં નથી લાગવું પડતું. એ વખતે બેંકોમાં લાઈન લાગતી હતી. એટલે કે મારે બેંકમાં જઈને પૈસા જમા કરાવવાની લાઈનમાં તો ના ઉભા રહેવાનું. આ બીજો એક ફાયદો છે કે પૈસા સીધા બેંકમાં જમા થઈ ગયા. Another important thing, that inventory management. A small shopkeeper knows कि क्या बिका है उसका, एक अठवाडिये में क्या बिका है, उसको क्या लाना है. He can just simply see his telephone. He doesn't have to maintain any accounts. So next level, what the Honorable Prime Minister has envisioned, that the next level for this cashless transaction is enabling the small shopkeepers, small vendors, small businessmen develop a business strategy based on their experiences of cashless transactions. That is what the Honorable Prime Minister has envisioned. So once this is settled,
then the next level would be taking them for business strategy development based on whatever information they and experience they've got from cashless transaction. Here I want to add that Bharat Sarkar ने एक और announcement किया था. Shopkeepers with a gross turnover up to 2 crores का आज presumptive tax लगता है 10% पे उनका income tax count होता है. Government said to the extent they do cashless transaction, on the turnover of cashless transaction below 2 crores, the presumptive tax is reduced by 2%, which is a huge amount for them. And that was another way of incentivizing our shopkeepers on this. I think, sir, this is where, sir, I would request you to take over because now you are talking of the results. Now, these are some very interesting figures which I have been quoting everywhere now. एक हफ्ते में आप देखिए, हाँ? You saw that documentary that pan is also being sold cashless. So when we were shooting that, the guy who was shown in that, he had to eat 15 pans because there were 15 retakes. He's a senior executive director. Each time he used to swipe. I said, "Paisa dena hai." So we sold 2,610 pans in 1 week. 100% cashless. You go to JNFC Panwala, absolutely independently. Go anytime, anywhere, any manner. He will not take cash. Because he's very happy. He's getting in time money. Haircutting salon, 380 people came to get their hair cut. Bicycle repair. Laundry, 300. આટે की ચક્કી, લોટની ઘંટી, સાહેબ બેન ચલાવે છે અમારે ત્યાં. એ બેન પણ પોસ મશીન રાખીને બેઠા છે અને એના પેલામાં ઈ વોલેટ છે અને લોટ દળાવવા આવે તો એ પણ ઈ વોલેટથી જ થાય છે. વી હેવ ઓલ્સો અ મોચી की दुकान. જૂતા પણ રિપેર ત્યાં કેશલેસથી જ થાય છે. એટલે ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ ધી સ્મોલેસ્ટ ઓફ સ્મોલ બિઝનેસ પીપલ and which people use almost every day. And big townships have such large number of traders. And big township, what I'm talking, cantonments, I'm talking of paramilitary forces townships, I'm talking of SR, Reliance, ONGC, GAIL. Now all of them have these kinds of shops. Now each and every one of them, you just can't imagine a cobbler using all these means. But you have to, again I said, you have to provide a POS machine. That the township administration has to provide. You can't expect a cobbler to buy or possess a POS machine. I'll come back to that. Next. Just listen to the Prime Minister. इसको जरा ऑन करो ठीक से, वो प्रॉब्लम है तुम्हारा. उसको पूछा तेरा क्या फायदा? बोले साहब पहले क्या होता था? पीछे लेके एक तो The Honorable Prime Minister is talking of a vegetable vendor. The same thing. किसी भी दल का हो, उससे लोगों 52 रुपीज का सब्जी लिया, तो फिर वो मैडम कहती थी चलिए जेब और पैसे नहीं 50 रुपए का नोट ले लो, तो बोले मेरे 2 रुपए चले जाते थे. अब मैं भी बोल नहीं पाता था और बोले मैं लगाता था हिसाब, तो साल भर में मेरा 800,000 रुपया ये रुपया 2 रुपया न देने में ही हो जाता था. बोले इसके कारण भीम ऐप लगाने के बाद 52 रुपया है तो 52 रुपया मिलता है, 53 रुपया है तो 53 मिलता है, 48 रुपये 45 पैसा है तो पूरा मिलता है. बोले मेरा तो 800,000 रुपया बच गया. देखिए चीजें कैसे बदलती है. और इसलिए हम कम से कम आप मोदी का विरोध करें. So what Honorable Prime Minister said, that actually these are unintended benefits. And the next level that we have to take is that we have to enable these small business people, small vendors, small shopkeepers to next level of business strategy development. How they should do the inventory management, how they should bring what they are not, what they are able to sell, and what they are not able to sell that should be disposed of. Now there are only 2 last things before we throw the entire session for 5-10 minutes of questioning. See, there are 2 important things which are required in this entire drive. E-wallets can be downloaded, not an issue. POS machines, even today, is a big problem. And POS machines, all being provided by the banks, are linked to the bank account, and they have an essential prerequisite of having a minimum balance of 10,000, 5,000, 20,000, or whatever. Now, this is only a suggestion. Any township which wants 5, 10, 15, 20, 25, whatever number of POS machines,
We have already, based on our experience and our resources, we have tied up for POS machine supplies. The POS machines which, kahan hai? The POS machines which we have used are mobile POPs, like this. Now they are SIM card operated. They can be taken anywhere. They are not connected with the telephone line. And they are very handy, very nice, and we have a small arrangement with the company. So if anyone wants, we can give supply POS machines in bulk. If you want 100, we can give 100 or whatever number. That is one. Whatever is the business arrangement, that can be understood later. Secondly, and more importantly, see, this entire drive has to have 2-3 technical people giving trainings, giving technical guidance, using all these kinds of standard operating procedures that we have developed. I have an army of people which can be put in any township, maybe 2 people, 3 people, depending on the size of the township, for a period of time, maybe 2 months, 1 month, 1.5 months. But then there would be some kind of a nominal payment for that. Whatever we are giving them for hiring, we can provide it. So this is a kind of a hand-holding that we have offered. Since we did it, we learned and we strengthened and we made up our own entire system. We would like to extend these services to any township in Gujarat or even outside Gujarat if they really wish to avail of these services. But there's no compulsion. If you can do it on your own, the best. So these are 2 things which I wanted to tell that can be provided. In the last paragraph, we have also written, you have our emails, you have our telephones, and you can just requisition our services. We'll be very, very happy to provide our technical support and manpower support to you all. So now we request Mr. Mathur to... No. We take questions, sorry. Yeah. Any questions? भाई वो है, माइक है कहीं पे? माइक है किसी के पास में? And उनसे ले लो मैडम से. संदीप, तुम अपने एक्सपीरियंसेस को कुछ कहो, ठीक है? और तुम उदित कहना चाहोगे कुछ? हाँ, कलेक्टर भरूच को तो हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है. हाँ, हेलो, कम संदीप, कम आप. तुम भी उदित आओ. कलेक्टर नहीं, सुरेंद्र नगर. हेलो. वहाँ पे मैंने इसको कहा बहुत बड़ा द्रंगदरा का कैंटोनमेंट है, द बिगेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ गुजरात. मैंने कहा तुम इसको करा दो. एक कैटेगरी शुरू हो. मैंने कहा ये तुम कर दो, फर्स्ट कैंटोनमेंट में हम प्राइज दिलवाएंगे, नहीं दिया तो यार ऐसे ही इंसेंटिवाइज करना होगा. Yeah, may I ask question, sir? बोलिए. Yeah, hands off to JNFC. You have prepared rather a bridge all of us to travel on, or maybe a die has been produced so that परिचय दीजिए ना पहले. So that the many products can cover. My name is Sanjay Joshi. I come from Saurashtra Cement Limited. We have a small township of 400 people in Portmandir district. See, being a student of law, I mean a simple query, the answer must be ready with you because you have already done it. The question is, being a student of law, I read somewhere that the refusing to accept the cash would be is an offense under the criminal procedure code. So I mean, what could be the answer when such a question come to us? I mean, देखिए ऐसा है, ये हम लोग बहुत सिंपल बात कर रहे हैं कि टाउनशिप में एक नियम है. हमने कोई ये नहीं कहा है कि हम कैश को डिसऑनर कर रहे हैं. हमारे यहाँ नियम है कि भाई हम कैश नहीं लेते हैं. अगर आप इस तरह की मानसिकता से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस ऑफ लॉ से, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे ये. आई हैव डन माई PhD इन इंटरनेशनल लॉ, सो आई नो अ लिटिल बिट ऑफ लॉ. ऑलराइट. हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उसके 1000 रास्ते होते हैं, और किसी काम को नहीं करना चाहते हैं तो उसके 1 लाख रास्ते होते हैं. तो अगर हम इस मानसिकता से जाएंगे कि साहब हम तो कैश करके हम बड़ा भारी क्राइम कर रहे हैं इस देश के अंदर, तो ये तो कोई मानसिकता हुई नहीं.
मैं आपको इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अरे भाई हम नहीं, हमारा नियम है। अरे गुजरात के अंदर घर के अंदर जूता नहीं लेके जाते हैं, मेरे घर में उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जब मैं गुजरात में आया तो मैंने देखा भाई यहां तो सब घर में घुसने के पहले जूता उतारते हैं, तो मैं भी उतारने लगा। तो ये तो एक व्यक्ति, एक घर, एक संस्था, एक समाज और एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक नियम है कि साहब हमने अपने पर्पस के लिए नियम बनाया हुआ है कि हम कैश नहीं लेते हैं। इसमें हम कौन सा बड़ा भारी पाप कर रहे हैं या हम अपराध कर रहे हैं? तो ये लॉ वगैरह की बात से अगर आप ये मानसिकता से ये काम शुरू करेंगे तो आप कभी ये नहीं कर पाएंगे। तो मेहरबानी करके इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप जूता हमें उतारना है, हम घर में जा रहे हैं, ये नियम है, ये नियम का हम पालन करेंगे। इसमें कौन सा बड़ा भारी हम अपराध कर रहे हैं? और यदुवेंद्र माथुर और मैं उत्तर प्रदेश का हूं, ये राजस्थान के हैं, वहां ऐसा कोई नियम नहीं है। धड़धड़ा के लोग जूता पहन के घर में घुस जाते हैं। तो ये तो नियम है, समय काल परिस्थिति। व्हेन यू आर इन रोम, डू एज रोमन्स डू, दैट्स इट। सो प्लीज डोंट प्रोसीड विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। हाँ, देखिए ऐसा है कि हम यहां शास्त्रार्थ लीगल करने के लिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपका कोई प्रश्न मैं नहीं लूंगा। हम लीगल शास्त्रार्थ के लिए यहां नहीं आए हैं। हम एक व्यवस्था जो इस पूरे देश में धीरे धीरे के पनप रही है, उस व्यवस्था को जो भारत सरकार, जो भारत के प्रधानमंत्री, जो भारत की सभी सरकारी एजेंसियां और जो भारत के सभी बड़े लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए है। मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, आप आइएगा लंच में, ठीक है? और इस तरह के क्वेश्चंस मैं यहां एंटरटेन नहीं करूंगा। अगर आपको ये मुझसे समझना है कि साहब आपने कैसे किया, इसमें क्या मुश्किल है, क्या मदद हो सकती है, मोस्ट वेलकम। कायदे और कानून के प्रश्नों के लिए हम लोग यहां नहीं बैठे हैं, ठीक है? और इसमें जरा भी कोई गलत नहीं है, कोई कायदे का कहीं पे भी कोई वायलेशन नहीं है। जी की बात पे ही ऐड करूंगा कि जैसे पल्स पोलियो, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपने अपने बच्चों को पल्स पोलियो पिला दिया, लेकिन आपके मोहल्ले के और पड़ोसी के बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को पल्स पोलियो की गोली नहीं दे रहे, तो अब जबरदस्ती आप पल्स पोलियो किसी भी बच्चे के को नहीं पिला सकते कानूनी हिसाब से। वो पोलियो कैंपेन में बार बार वो घर आएगा कि भाई आपके घर में छोटा बच्चा है, पल्स पोलियो की आप गोली लीजिए। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आप विद्वान हैं, कि एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं। एक्सटर्नैलिटीज मीन्स कि अगर मैं अपने बच्चों को पोलियो पिला दूं, आप भी अपने बच्चों को पोलियो पिला दें, लेकिन और अगल बगल वाले पोलियो नहीं पिलाएं, तो हमारे अपने बच्चों को पोलियो पिलाने का फायदा नहीं होगा। इसलिए सरकार उन एरियाज में खर्चा करती है जिसको इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं, कि सबका उसमें हित होगा, सबका भला होगा। तो ऐसे काम को गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज करे, पोलियो की दवाई फ्री में दे दे, इंसेंटिवाइज करे, पोलियो कैंपेन पे खर्चा करे, क्यों कि सबका भला, लेकिन उसमें एक भी अगर छूट जाएगा तो वो सारा करा धरा काम रह जाएगा। तो जैसा राजीव जी कह रहे हैं कि कैश देना ना देना या कैश लेना ना लेना, एक संकल्प के रूप से कैश लेस या लेस कैश, कई जगह ये भी चर्चा चलती है। मैंने और फोरम्स पे देखा है, लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये तो कैशलेस नहीं होना चाहिए, हम लेस कैश से ही संतुष्ट हो जाएं। ऐसा भी लोग कहते हैं कि भाई कैशलेस का क्यों बखेड़ा करें, छोटा मोटा है। वो रात को कभी आया, उसने कहा कि नहीं अब पान दे दे, और पान वाले ने पान बेच दिया, उसको कैश ले लिया। तो कैशलेस या लेस कैश का भी अननेसेसरी विवाद आ सकता है। लेकिन वही पल्स पोलियो का मैं उदाहरण दूंगा। क्या फर्क पड़ता है कि कोई थोड़े लोगों ने नहीं पिलाई पल्स पोलियो, क्या फर्क पड़ेगा? 99.9% ने पिलाई। वैसे तो हार्ट के ऑपरेशंस 99.9% सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन 0.1 फेल होते हैं। मेरे फादर का जब ऑपरेशन हुआ था वो 0.1 में आ गया था। तो आप क्या उसको सही मानेंगे कि औरों के तो ऑपरेशन अच्छे हो गए थे, मेरे फादर का जब हुआ था तो उनकी डेथ हो गई ऑपरेशन में? तो साहब, तो मैं क्या चाहता हूं, 99.9 से मैं संतुष्ट होऊंगा? नहीं, मैं क्या चाहता हूं 100%। एयरलाइन में, हवाई जहाज में हम लोग बैठते हैं,
हवाई जहाज ज्यादा सेफ है सड़क क्रॉस करने से। ज्यादा लोग प्रतिशत के रूप से सड़क क्रॉस करने में मरते हैं, एयरलाइन से कम मरते हैं, लेकिन फिर भी एयरलाइन में इंश्योरेंस। तो कहने का पॉइंट है कि वाद विवाद का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन ये एक पल्स पोलियो के तर्ज पे अगर लें कि बिल्कुल भी हम उसमें जिसको कहते हैं जीरो सिग्मा डिफेक्ट, हमको अगर ये तय करा है हमने, तो पहला तो फंक्शन है तय करने का है। सौराष्ट्र सीमेंट नहीं तय करना चाहती, उनका विवेक है, लेकिन अगर तय करें तो फिर आप उसको 100% करें, फिर वो आधा अधूरा मत करें। देखिए ये पॉइंट माथुर जी ने जो कहा कि बहुत सारे लोगों ने आप में से ये छोटा सा दृष्टांत सुना होगा कि गांधी जी के पास एक महिला गई अपने 8 साल के बच्चे को लेके, उसने कहा कि साहब ये इसकी बड़ी कुटेव है, बड़ी खराब आदत है, ये सारे दिन गुड़ खाता रहता है, तो आप इसको समझाइए कि गुड़ ना खाए। तो गांधी जी ने उनको बड़ा विचित्र सा जवाब दिया है, कहते हैं ऐसा करो तुम 8 दिन के बाद आना। आज मैं तो नहीं कह सकता इस बच्चे को, गांधी जी ने कहा था तो वो 8 दिन के बाद आई। अच्छे समझाया कि भाई देखो गुड़ बड़ी खराब चीज है, दांत टूट जाते हैं, नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए। जब ये सब हो गया तो उस महिला ने गांधी जी से पूछा कि साहब ये बात कहने के लिए आपने 8 दिन क्यों लगाए? तो उन्होंने कहा कि मुझे भी गुड़ बहुत अच्छा लगता था, मैं भी गुड़ खाता था, तो मैंने पहले 8 दिन में तो गुड़ खाना बंद किया और उसके बाद मैंने ये शुरू किया कि हाँ मैं इसको कहने के लिए लायक बनता हूं। तो देखिए आप लोग गुजरात के दूर दूर से कोने से आए हैं, हम मुद्दा क्या लेके चले हैं कि हम पहले खुद तो कैशलेस बने, फिर हम दूसरे को कहें कि तुम कैशलेस बनो। ये टाउनशिप का जो मुद्दा है ये एक उदाहरण बनाने का मुद्दा है कि हम देश में, हम गुजरात राज्य में, आज गुजरात राज्य ही तो पहला राज्य है जहां पहला कैशलेस टाउनशिप बना, तो गुजरात ऐसा राज्य क्यों नहीं बन सकता कि जिसके अंदर जितने भी टाउनशिप हैं सारे कैशलेस टाउनशिप हैं। तो एक दृष्टांत, एक उदाहरण, एक अनुकरणीय उदाहरण ये बनाने की बात है। तो इसके अंदर कोई कायदा कानून ये नहीं आता है। अरे भाई हम नहीं है, गांधी जी क्यों नहीं कह सकते थे उस बच्चे को कि भाई तुम मत खाया करो जाओ, और फिर जाके पीछे जाके खा लेते। तो हमें खुद पहले बनना है, हमें अपने नागरिकों को बनाना है, उसके बाद हम दूसरे को कहेंगे। चलिए क्वेश्चंस के लिए बताइए, और बताइए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम हनुमान दुबे है, मैं बिरला सेलोसी खरच गुजरात से आया हूँ। सर जैसे कॉलोनी में और सारे एरिया में कैशलेस ट्रांजैक्शन हम कर लेंगे, लेकिन जैसे प्लांट में कुछ एरिया है जहाँ पे मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड है, लाइक बीइंग ए केमिकल प्लांट, तो कॉन्ट्रैक्टर जो कैंटीन मशीन है वहाँ पे मोबाइल नहीं है, तो इज देयर एनी अदर वे हाउ वी? हाँ, आप कूपन दे दीजिए जैसे हमने दिए हैं। ओके सर। हाँ, कूपन आप प्रीपेड कूपन दे दीजिए। ओके, हमने अपने कैंटीन में प्रीपेड कूपन का सिस्टम रखा हुआ है। यस सर। जहां आप इस तरह का लिमिटेशन है कि भाई मोबाइल नहीं चल सकता है, किसी के पास कुछ नहीं है, वो प्रीपेड कूपन है, आप दे दीजिए, कैश नहीं लेंगे, कूपन ले लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है। Good afternoon, sir. I'm Yatin Chai. I'm representing Gujarat Guardian Limited, Modiga we are at Bharuch. And congratulations to JNUC for the wonderful achievement. We are also striving towards a cashless township in our colony, and residents and people are supporting. Couple of things just I want to advise from you. There are two things which we are facing difficulty. One is the villagers from the local villages. They are supplying milk to domestic residents. We are having that issue. And second is, of course, the maid servant payment paid by the individual, those who are coming from different villages. Okay. The two concerns I दूसरा वाला क्या है, मैं नहीं समझ पाया। First is the villages. वो तो ठीक है, समझ में आ गया, दूध वो आके देके जाते हैं। Yeah. तो कैश पेमेंट चाहते हैं। Cash payment ठीक चाहते है, हैं। ठीक। Second is the payment to the maid servant. नहीं उनको मेरे पास है। हाँ। Payment to the maid servant, हाँ। maids those who are coming from nearby villages. अच्छा, मुझे आप ये बताइए, मेड सर्वेंट, जितनी ये मेड सर्वेंट आती हैं, इनमें से कितनों के पास में मोबाइल फोन है और कितने के पास नहीं है? Almost सभी के पास मोस्टली मोबाइल फोन तो होता ही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये देखिए कि करोड़ों, अब ये भरूच कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो करोड़ों जनधन अकाउंट्स खुले हुए हैं, उन सबके जनधन अकाउंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना। तो देखिए कंपनी, अगेन वही वाली बात है कि कंपनी को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो दूध वाले को भी तो थोड़ा समझाए।
हमने जो बोला ना स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मैस एंगेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो हमने भी ऐसे ही किया था। हमारे भी बहुत सारे सप्लायर्स थे। आज की तारीख में भी हमारे इक्का दुक्का ट्रक अंदर आता है जिसमें कैश होता है या जिसमें फास्टैग नहीं होता है। तो ये कंपनी का काम है। ठीक है, कंपनी बहुत बड़ी संस्था है, कंपनी के पास बहुत बड़ा मैन पावर है। तो अलग से एक 2-3-4 लोगों की टीम बनाइए, वो उनके पास जाएं, समझाएं। देखिए आज गुजरात में तो ये बड़ा आसान है काम। देखिए साहब, गुजरात में मोस्टली जनधन अकाउंट खुल गए हैं, 90% जनधन अकाउंट खुल गए हैं, सबके पास मोबाइल होते हैं। ठीक है, थोड़ा समझाने का, एंगेजमेंट का प्रश्न है जो आपको मैनेजमेंट की तरफ से करना पड़ेगा और आप कर पाएंगे। हाँ, दूसरी बात जो हम पूरे इसमें वक्तव्य में नहीं कह पाए और जो कहना चाहता हूं मैं कि देखिए हर कंपनी में जो बड़ा टाउनशिप होता है उसमें एक लेडीज क्लब होता है। लेडीज क्लब होता है, हमने अपने लेडीज क्लब को इन्वॉल्व किया। 250 महिलाएं लेडीज क्लब की, वो घर घर गईं और उन्होंने सेंस ऑफ ओनरशिप लिया। हमने कहा चलो ये लेडीज क्लब को एक टास्क है, सबके यहां मोबाइल वॉलेट डाउनलोड कराओ। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो वो घर घर जाके लोगों को निकाल के लाएं कि भाई देखो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 5000 लोगों को वहां बैठना है। तो देखिए ये एक सेंस ऑफ ओनरशिप है और सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। इसको टॉप मैनेजमेंट जितना एक्सप्लॉयट कर पाए, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। आप उनको इन्वॉल्व करिए, उनको कहिए आप जाइए, चलिए लेडीज क्लब का ये एक हो गया, टारगेट हो गया, चलो भाई इन सबको करो। दूध वाला कोई भी होगा उसको हम सीधा पेमेंट करेंगे, कैशलेस पेमेंट करेंगे। तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स, और इसके लिए ऐसा नहीं है महीना 2 महीना चाहिए, ये 2-4 दिन के अंदर निपट जाता है काम, अगर सब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो। ये हमारा अनुभव है। ठीक है, थैंक यू। जो आपने बात की, जस्ट टू ऐड, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है मान ली, तो प्रॉब्लम्स वहां आएंगी जब आपकी कॉलोनी में, टाउनशिप में, जैसा आपने कहा कि वो मेड सर्वेंट्स के हो सकता है बैंक अकाउंट ही नहीं हो, तो वो तो सबसे पहला स्टेप है। बैंक अकाउंट आपकी कॉलोनी के अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड जैसे है ना गेट पे पूछता है, वैसा सिस्टम रखिए गेट से कि एवरीबडी एंटरिंग हैज टू हैव अ बैंक अकाउंट। सेकंड स्टेप इज कि बैंक अकाउंट को किसी मोबाइल से सीड करना है, और फिर आधार भी उसके पास होगा। अगर आधार नहीं है तो वो भी करिए, क्योंकि ये तो बेसिक, जिसको कहते हैं इंडिया स्टैक, ये तो बेसिक आर्किटेक्चर है जो आपकी टाउनशिप के अंदर जो भी आ रहा है ना, वो ये 3-4 चीजें तो मस्ट हैं। बैंक अकाउंट, अगर मोबाइल नहीं है तो दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट तो है। फिर नंबर 2 उसका आधार कार्ड है कि नहीं, तो आधार कार्ड भी बैंक अकाउंट में लिंक करना है। तो ये काम तो मिनिमम आपको कैंपेन मोड में इंश्योर करना है कि कॉलोनी के अंदर कोई आ ही नहीं सकता जब तक उसके पास ये 2 चीजें हैं कि नहीं। अगर आधार कार्ड नहीं है, कलेक्टर साहब से कांटेक्ट करिए, यू कैन सपोर्ट। सो दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। ऑल बैंक अकाउंट्स टू बी सीडेड विद द आधार कार्ड एंड विद द मोबाइल, एंड 1 मोबाइल 1 बैंक अकाउंट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है देश में कि मोबाइल एक फोन है और 3 जगह बैंक अकाउंट है। ये कई मिडिल क्लास के लोगों को इरिटेशन बढ़ जाती है, अरे हम तो करना चाह रहे थे भीम से, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा। वाई? क्योंकि वो 1 बैंक अकाउंट, 4 बैंक अकाउंट और 1 मोबाइल नंबर देकर रखा है। तो वो आपको कट कराना पड़ेगा। 1 बैंक अकाउंट 1 मोबाइल। ओके, और देन द प्लेटफॉर्म इज सो इजी। सो प्लीज, ये हम सबके भी साथ प्रॉब्लम है। जैसे ही सिस्टम पे हम जाते हैं, डिस्कवर करते रहे उधर जयपुर में भी एक बैंक अकाउंट है, वो भी यही नंबर है, दिल्ली में भी यही है, तो जाके बैंक को चिट्ठी लिखो कि हमारा ये मोबाइल नंबर इस अकाउंट से हटा दो और कोई अपनी वाइफ का नंबर दे दो, या कुछ घर में आपको करना पड़ेगा कि आपका 1 बैंक अकाउंट का 1 मोबाइल है। बोलिए। So, first of all, good afternoon, and I am myself Colonel Vipin Chandran from Reliance Jamnagar, sir. My kudos, my congratulations to GNFC for doing this great initiative. We are very thankful to you for being part of this entire exercise. I want to share my small experience here at Jamnagar. We have a township of 6,000 families and 2,000 bachelors, having a population of nearly 20,000. And in our township, there are more than 50 shops and other small establishments. We just want to share a small experience in our launching of this. In the year 2015, December, our company has launched the Geo for the employees. So all the employees have been given with the Geo connection. And later, in the middle of last year,
we have developed a mobile application for our complete township. Application having all utilities which are available, services available in the township, that we have given to the entire population. And we have also registered our vendors for the Geo Money, though it was not officially launched at that point of time. And Prime Minister's announcement on 8th of November was, in fact, a blessing in disguise for us, because immediately there was a heavy crash crunch and people were running helter-skelter for finding a solution to the daily business of buying and transactions. So that time we officially launched this Geo Money in all our shops. We established that, and then we could immediately convert it into a nearly cash-free. The only challenge, like some of the points which I highlighted, were how we could handle the maid servants and people at a lower strata of the society who are coming for various works. Partly we could address. It is not 100% but still we are moving in that direction. देखिए ऐसा है कर्नल साहब, in my personal opinion, very much personal opinion, if any township after GNFC has the potential to become second 100% cashless township, it is Reliance Township. Thank you, sir. All right. Now, having said that, I mean, you have to make it 100% cashless. Correct. So that initiative is very good. Yes. But it's partly cashless. Yes. And what greater honor can be for Reliance to set up an example to other? And you have 14 townships all over the country. Reliance has 14 townships, such townships all over the country. I've done good amount of research on the townships that are existing in the country. So you should go back, gear up, and actually within military discipline, you should make Reliance Township 100% cashless in just 10 days. Why can't you make it? Very correct. Yeah. It's the top management which has to do it. I had written a letter to Dhanraj. You convey my word to Dhanraj. Sure. Yeah. Sure. And our township being entirely Wi-Fi, we have that added advantage. करिए आप, मतलब आपके पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निकल नो हाउ है, रिसोर्सेज हैं, आप 10 दिन में बन के दिखाइए ना होली के पहले. Let us set up this target. It is Collector Jamnagar should ensure कि होली के दिन Jamnagar should this Reliance Township should be 100% cashless. Exactly. नहीं, ये जरा देख लेना, हमारा एसओपी बड़ा स्ट्रांग है, इतना जल्दबाजी मत करना. हाँ, और फिर मैं रियलिटी चेक भी कराऊंगा, जैसे मैंने एसआर का कराया. अपने आप एसआर वालों को मालूम भी नहीं है कि मैंने कराया है. ठीक है ना? तो आप जल्दबाजी मत करना, होली का टारगेट रखिए, आप डिजिधन का मत करिए. ये बहुत, यहाँ क्या है, कोई छोटा सा भी, वो हमारे प्रेस वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, वो जाके वहां पे पान भी खरीदे हैं, कहते वही तो मैं रुकड़े से खरीद के लाया हूं. ये इतना इजी नहीं है. आप करिए, बहुत अच्छी बात है. डिजिधन मेला तो वो अलग चीज है. वो तो आउटसाइड पूरा हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट का. इसको कैशलेस टाउनशिप को डिजिधन के साथ में मिक्स मत करो माकड़िया. ये कॉन्सेप्ट अलग है. ये थोड़ा सा धीरज और थोड़ा सा मेहनत और पसीने का काम है. ठीक है ना? इसमें वो उनको कर्नल साहब को, उनके ऊपर जो हैं, आपको देखिए, रिलायंस टाउनशिप हो सकता है बड़े आराम से 11 या 12 मार्च तक बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, ठीक. पॉइंट वेल टेकन. लेट अस हैव रिलायंस एज सेकंड टाउनशिप. एब्सोल्युटली. चलिए आगे और बताइए, और किसी कुछ बात. Good afternoon. I'm Rakesh Manocha. I'm from Reliance Baroda. This has been a wonderful presentation in the sense that it's also highlighted that the transition from cash to cashless is not as easy as I was perceiving it to be. Just a couple of observations. One is the reference to one mobile, one account. On a personal basis, I'm operating all my bank accounts, ICICI and SBI, using my one single mobile number. Now, the moment I transition into separate, if I need to have the philosophy of one mobile, one account, I'm effectively being forced to have multiple mobile numbers, which to my mind is actually a problem. I prefer an iPhone, and I'll be compelled to use a mobile other than an iPhone, for example. So I think this is something which needs to be looked into more carefully. I take your point, but this is for
people who are unable to use UPI. See, it's your choice. See, if you're not following UPI, AEPS, that architecture, and you are typically staying on the credit card, debit card ecosystem and e-wallets, then you need not disconnect your bank account from one mobile phone and you can continue. But we are talking of customers who have not been used to digital. Okay. See, those who are already used to digital, I'm sure you and I have been using credit cards, debit cards for maybe 15 years. In fact, I've used Beam also. I started my career in 1981 with Diners Club. You know, Diners Club. So this is old technology. But we are talking of the new guys who have not used digital, but they don't remember they have put their mobile number in their bank account. And now you are introducing them to the digital world. They will suddenly find it not operating because they have their bank account linked with more than one. सजेशन है ये कोई यूनिवर्सली एप्लीकेबल या हमारा ये जो टाउनशिप का जो हम ड्राइव चला रहे हैं उसका ये एसेंशियल कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए. हम इस वक्त बात कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म की, और वो किसी भी प्लेटफॉर्म एक मोबाइल से अगर पॉसिबल है मल्टीपल प्लेटफॉर्म तो आप उसको यूज करिए. इसमें आप जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. वो माथुर साहब ने एक चीज कही, वो टिपिकल जो सर्टेन एप्लीकेशंस हैं वो एक मोबाइल नंबर से ही अटैच्ड हैं. नहीं है तो कोई हमारे इस टाउनशिप ड्राइव में उसका कोई विषय या उसका कोई मतभेद नहीं है. ठीक है. हाँ जी सर. एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और था. जबकि ये प्रेजेंटेशन हो रहा था मैंने अपने मोबाइल से *99# को ट्राई किया. दोनों दफा SMS चार्ज लगे हैं. सी आप अगर मोबाइल का SMS यूज करेंगे SMS चार्ज लग रहा है, बट ट्रांजैक्शन चार्ज 0 है. जो डेबिट कार्ड अगर क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगता है. सो पॉइंट अंडरस्टूड. सॉरी. देखिए इसमें क्या है कि व्हाट इज लेस कॉस्टली ऑप्शन. एंड SMS का अगर आपने पैक खरीद लिया है तो 10 पैसे का एक SMS ठीक है ना सर. तो ये विषय हम बहुत रिसर्च कर चुके हैं. चलिए और कुछ. देखिए बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं. तो आप वो थर्ड टाउनशिप अपना बनाइए रिलायंस बड़ौदा को. हाँ देखिए यहां तो हम टारगेट लेके बैठे हुए हैं, हम लोगों को अडॉप्ट करना है. हाँ चलिए आगे. और कोई हो गया तो हम अपने कलेक्टर साहब को बोलें जरा. ये भरूच कलेक्टर साहब हमारे साथ इन्वॉल्व रहे हैं, ये कुछ बोलेंगे. सुरेंद्रनगर के कलेक्टर साहब हैं, इनको मैंने कहा है कि भाई आप धरंगद्रा का जो कैंटनमेंट है उसको आप 100% कैशलेस कैंटनमेंट बनाइए. तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है. तो 2 कलेक्टर साहब लोगों को हम लोग 2 मिनट सुनेंगे कि क्या इनके ऑब्जर्वेशंस हैं. बाकी के सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. बाकी बोलना चाहे वो यहां आ सकता है कलेक्टर. हाँ ये 2 मेरे को વધારે वाला નથી. हाँ बनने जाना. કાલે હું ફોન કરું કે સર તમે એમને બોલાયા હતા. એટલે તમારામાંથી જેને જે કહેવું હોય. રમ્યા, in case you wish to say anything. Bharti, you wish to say anything. H.K. Patel, all of you are equally dear and near to me. M.S. Patel. Can you share a little bit about how did in your Bharuch township you engage with your bankers? Less said the better. No, but this is Rajiv. See, Rajiv, this is the challenge. अब भाई ये तो तुम लोगों को वहां बैठ के करना है बॉस. But that is an issue you can't duck. See, you have to walk through that route. आपको अपनी टाउनशिप के जो आपके जो बैंकर्स हैं, आपकी सैलरी आपके एम्प्लॉइज की कहां जा रही है. नहीं देखो ऐसा है कि वो आपको अपने बैंकर्स ये सब को मोस्टली बड़ी कंपनियां हैं. इन सब में ये सारी कंपनियों के अंदर ऑल सैलरी पेमेंट्स आर लिंक्ड टू बैंक्स. आज से नहीं, हमेशा से. इफ आई एम करेक्ट. एम आई करेक्ट. हाँ तो देखिए बैंकर्स से इंटरफेस का यहां पे सिर्फ एक इशू तभी आया था कि जब हमें पॉस मशीन चाहिए थे. ठीक है. बैंकर से हमारा कोई इंटरफेस नहीं है. आपका पुराना बैंकर बार बार जो है वो आपको याद कराता है. देखिए हमारा बैंकर्स का यहां कोई इंटरफेस नहीं है. अगर हमने पॉस मशीन उनकी नहीं ली तो जय भगवान, हम बैंकर से फ्री हो गए. ठीक है. पॉस मशीन का ऑल्टरनेटिव मैं आपको दे रहा हूं. जिसको पॉस मशीन चाहिए, लार्ज नंबर में चाहिए, वो हमारे पंकज गुप्ता साहब से कांटेक्ट करके ले लें. टेक्निकल मैन पावर चाहिए तो आप वहां से ले लें. अच्छा जहां तक सवाल ये है कि सैलरी पेमेंट्स वगैरह, तो सैलरी पेमेंट्स वगैरह तो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. देखिए पॉस मशीन भी एक मीडिया है, मीडियम है. इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर रिटेलर के पास पॉस मशीन ही हो. वी आर टॉकिंग ऑफ
मैं बॉम्बे में केम्स कॉर्नर पे मुच्छड़ पान वाले को उसके डायरेक्ट मोबाइल फोन पे पेमेंट करता हूं पिछले काफी दिनों से। सो ऐसा नहीं है कि ये कल्चर, यू डोंट नीड अ पॉस मशीन नेसेसरीली। मोबाइल टू मोबाइल, इनफैक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट transfer is the way forward. No, that is what exactly we did. So Rajiv, you need not, necessarily have the POS machine. I am saying also encourage people to get to the UPI, Aadhaar-enabled payment systems. So AEPS and जो आधार पे, तो जो रिटेलर है, दुकान वाला है, उसका आधार पे होगा और so ये जो फ्रेमवर्क है ये कॉस्ट फ्री है। देखिए ऐसा है कभी भी कोई बैंक का चार्ज नहीं लगेगा। आज की तारीख सिर्फ एसएमएस के चार्जेस लगेंगे, बट दिस इज द चीपेस्ट। ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिट 20 ट्रांजैक्शंस पर डे एंड टोटल अमाउंट इज आई थिंक 10,000 पर डे। सो एक आदमी 10,000 से ज्यादा का उसमें नहीं खरीद पाएगा। हाँ, आप बड़ी चीज खरीद रहे हो तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वो यूज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू अ स्वाइप मशीन एंड ऑल। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द नॉर्मल, वैसे भी 3 लाख, तो वो आर्किटेक्चर को देखते हुए टाउनशिप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, छोटी मोटी पान खाने गए, शाम को गए, तो आदमी अपना मोबाइल फोन अगर है तो कहीं भी किसी से भी कुछ भी खरीद बेच सकता है विदाउट अ पॉस। ठीक है, दैट इज द पॉइंट आई एम फ्लैगिंग। ठीक है, लेकिन पॉस मशीन हमने जो अपने जीएनएफसी में किया वो यही किया कि हमने सब जितने रिटेलर्स थे, सारे वेंडर्स थे, उनके मोबाइल टेलीफोन्स पर हमने ई वॉलेट्स तरह तरह के डाउनलोड कराए। भीम का उनको हमने ट्रेनिंग दिया, यूपीआई का ट्रेनिंग दिया, कुछ ने एईपीएस वाला सिस्टम भी जो फिंगरप्रिंट का वो अपनाया। लेकिन क्या होता है कि आज की तारीख में भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है, स्पेशली डेबिट कार्ड, वो बहुत प्रचलित है। किसान भी हमारे जो इतने फर्टिलाइजर खरीदा है, जो मैक्सिमम खरीदा है वो डेबिट कार्ड से खरीदा है, वो टेलीफोन से नहीं खरीदा है। तो डेबिट कार्ड तो टेलीफोन में एक बार चढ़ेगा बस। वंस यू हैव एन एड्रेस, फोन नंबर @UPI, तो वो आपका फिर एड्रेस हो गया। फिर आपको मतलब उसके बाद दैट इज कॉल्ड VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो वंस यू गेट अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जैसे मैं 1 मिनट कहता हूं कि मेरा yaduvendmathur@gmail.com, सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को बता दो वो आ जाएगा ईमेल। ऐसे ही करके हर जना बता देगा कि मेरा भाई ये VPA है। उसको मोबाइल फोन नंबर भी देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस दे दीजिए और मैं आपको अभी पैसे भेज सकता हूं, अगर आपके पास भी वो VPA है। सो गेम शुड बी कि इन द टाउनशिप ऑल सिटीजन्स शुड हैव अ VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस उनका होना चाहिए। बिल्कुल, वो अगर एक बार हो गया तो उस कॉलोनी के निवासी आपस में जितनी बार दिन में चाहें आराम से, कोई पॉस की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट लेस है, यहां से बैठ के वहां पैसे ट्रांसफर हो गए, वहां से इधर आ गए, तो वो इज द बेस्ट एंड द कॉन्टैक्टलेस, कॉस्टलेस, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट। मोबाइल फोन सभी के पास है। मोबाइल फोन को अगर सीड कर दिया आपके बैंक अकाउंट से, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हो गया, कोई पॉस मशीन की जरूरत नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलिए कोई और, वी कैन टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट कलेक्टर भरूच वांट्स टू स्पीक समथिंग। वन लास्ट क्वेश्चन इफ एट ऑल इट इज। ठीक है, संदीप आप कुछ बोलेंगे? And any other collector who wants to do some value addition, all of you, huh? MS Patel, कहीं के बनो है तो, हाँ, बोलो। Good afternoon, sir. After demonetization, sir, हर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में बहुत अच्छे से काम हो रहा था। We were having campaigns, mass awareness campaigns, पर वो सब एफर्ट्स स्कैटर्ड थे। फर्स्ट एफर्ट जहां हमको सिस्टमैटिक दिखा और जीएनएफसी में जो 100% कैशलेस ड्राइव किया उन्होंने, सो वी नाउ हैव फोकस कि इस टाउनशिप पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। सर मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा एक, और एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा। सर हमने डिजी धन मेला हमारा 19 फरवरी को था सर। उसमें इनिशियली फंक्शन वाज held to be some other place. Then we decided GNFC being 100% cashless township, so वहाँ हमने अरेंज किया। और सर डिजिधन मेला रियल सेंस में लाइव उस कारण हुआ कि कैशलेस टाउनशिप थी,
जो मिनिस्टर आए थे ऑनरेबल पुरुषोत्तम भाई रूपाला साहब, ही वॉज क्यूरियस, उन्होंने प्रीपेड जो ये था पेमेंट सिस्टम वो खरीदा, खुद गए टाउनशिप में, हर दुकान में जाके उन्होंने देखा कि रियली कैशलेस ये पेमेंट होता है कि नहीं होता है। उन्होंने खुद पान खरीदी करके देखा। ही वॉज अमेज्ड टू सी इवन ज्वेलरी शॉप, even a jewelry shop was doing a cashless business. So he was very appreciating the efforts of GNFC. Sir, उसके बाद हमने 22nd को अराउंड 30 प्लस टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेटर की मीटिंग ली थी, एंड आई अप्रिशिएट, उस दिन गुजरात गार्डियन से 3 शॉप, ओनली शॉप्स की बात चल रही थी सर, लेकिन आज नेक्स्ट स्टेप पे उन्होंने बात की कि होममेड मतलब मेड को पैसा कैसा दिया जाए या दूध वाले को कैसा पैसा दिया जाए. They are thinking now next level, and we also requested them, as GNFC has done with their dealers, sub-dealers, they can do also that experiment with their dealers and sub-dealers, so that more incentive and cashless transaction can be done, sir. इसमें जो हमने कैलकुलेट किया है कि हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज 500 ट्रक्स आते और जाते हैं, रिलायंस के अंदर तो उससे भी कहीं ज्यादा हैं. तो इफ वी हैव मेड दीज ट्रक्स कैशलेस ऑन रोड्स, which means 1,80,000 trips of trucks from one single company becoming cashless on highways. So this can be adopted by almost all companies. Let's make it compulsory कि भाई तुम्हारे ट्रक में डेबिट कार्ड या फास्टैग होना चाहिए, उसके बाद हम माल नहीं देंगे. Very easy. And now every truck driver is using there. So this is how multiple ripple effects can be generated. Can the collectors also give me some feedback about that other, you were given the first installment. Out of the 33 districts in Gujarat, I think 29 districts were released the first installment. So in your district, you must be using Yes, sir. small incentive money. Yes, sir. Which was given, and based on the same kind of subsidy scheme, Sir. This accreditation, one kind of something like a accreditation system for certifying districts, blocks and gram panchayats. जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, open defecation free for honoring these districts, blocks in gram panchayats. So that is there a part of the recommendation of the chief minister's committee, Yes, which was set up. Yes, sir. So उसका एक ये part है. Yes. Would you like to speak something on that? और anyone if you, anybody? आप में से इस स्कीम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? चलिए, we'll take your observation separately. Huh? You must have received the money. If you want, I can tell you which, of course I don't have the district-wise breakup, but the first installment was about 71 lakhs was released to 29 districts in Gujarat. So I think up to maximum was 5 lakhs. So Utilization के 5 lakhs to 25,000. Minimum was 25,000 and maximum was 5 lakhs. So this is the amount that Niti Aayog has released you. Now the moment you quickly use it, you can ask for more money from Niti Aayog, because we have got 50 crores of rupees for that scheme. For and that you have to use to create awareness, and you know how that fund is to be used. Those detailed guidelines are there with you. ये इन टाउनशिप में यूज करो ना स्पेसिफिक. So you can use ये that. जो So you have to आपके जो dovetail that कैशलेस with that, टाउनशिप है, and it is इन सब 10 में यूज rupees, करिए आप. 10 rupees per transaction. So if you can monetize that, you can get the momentum up. बढ़िया, बढ़िया. But you will have to take the first lead to see that it aligns. So what I'm trying to say is, what GNFC has done is a part of a larger scheme. So of course, the guidelines on which we are all operating is now the report, which was the interim report given by Committee of Chief Ministers on Digital Payment Systems. So that report has come, and there's a full action table. It is on the net. I will request you to download from the net on the report of Chief Ministers on digital payments. So there are a lot of activities given. It's all that the roadmap is very clear. And by the end of this year,
We have to really reach 30 billion digital payments by December 2017. That translates to literally 1 digital transaction per adult person per day. Then we can reach by December 2017 the target which has been proposed by the Committee of Chief Ministers. So I know it is ambitious, but these can be achieved if the collectors take on this activity as theirs. Just like the pulse polio campaign, the mass, you have to really make it into a movement, into a mass movement. Ernakulam is still remembered. When I was a district collector, then we used to all be told about Ernakulam total literacy, how the first district in the country became completely literal. संपूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम था, तो उसका बहुत एक क्रेडिट था. तो अब आई एम श्योर कि जितना मोमेंटम यहाँ क्रिएट हुआ है, पहला पूरी तरह से डिजिटल कैशलेस डिस्ट्रिक्ट भी गुजरात का ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा बनेगा, जैसा मोमेंटम मैंने देखा है आज. तो वो भावना आपको लेके जाना है. और यहाँ पे कुछ 15-20 जिला कलेक्टर साहिबान आए हैं, और मैं तो कहता हूं कि इस जिले में अगर कहीं डिफरेंस आता है तो 3 पद हैं, अन्य लोग अदरवाइज इसको न लें. इस देश में पीएम, सीएम और डीएम. वो क्योंकि टेरिटोरियल लोग हैं, वो एक कोई टेरिटरी के माई बाप हैं, लीडरशिप प्रदान करते हैं. तो जो डीएम साहिबान हैं और साहिबा हैं, ये लोग अगर लीडरशिप देंगी, देखिए आपका केवल वर्धस्त, आपका गाइडेंस और आपका सपोर्ट, और सबसे ज्यादा प्रासंगिक है आपका समय दान. आप अगर अपना समय देंगे, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं. हम लोग भी जब कलेक्टर थे तो ये परेशान रहते थे कि हम अपनी प्रायोरिटीज कैसे चुनें. तो टाउनशिप के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वहां भी आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, और आपको लगता होगा कि भाई ये प्रायोरिटी हमारी, तो और बहुत प्रायोरिटीज हैं टाउनशिप में, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है. ये हो सकता है कि कुछ चुनिंदा लोगों की नीति आयोग में ये प्रायोरिटी हो. तो ऐसा नहीं है. ये एक फ्रेमवर्क है, एक बढ़िया एक रोड मैप, एक ऐसी आधारशिला रख दी जाएगी, क्योंकि एक पूरा डिजिटल ट्रेल आएगा, पूरा डेटा एनालिटिक्स. इतना अब मैं आपको बताऊं कि गूगल मैप और ये अमेज़न, जो नीचे का डेटा बैंक है, वो एक कंपनी है पिटनी बाउस. शायद इसमें से कई लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा. पिटनी बाउस, किसी ने सुना है इस कमरे में नाम? शायद नहीं. 100 साल पुरानी अमेरिका की कंपनी है, 100 ईयर ओल्ड. नाम नहीं पता हम लोग को. क्यों? उन्होंने 100 साल पहले फ्रैंकिंग मशीन और पोस्टेज स्टैंप का एक तरह से आविष्कार किया, और 100 साल से वो यूएस पोस्ट को चलाते हैं. तो यूएस पोस्टल सिस्टम इज प्राइवेटाइज्ड, और उसका बैकग्राउंड कौन है? पिटनी बाउस. पिटनी बाउस सारा ज्योग्राफिकल लोकेशन कि कौन सा डोर का एड्रेस कहां है, तो पूरा गूगल जो प्लेटफॉर्म है वो पिटनी बाउस पे चल रहा है. तो गूगल का जो सीईओ है वो पिटनी बाउस के जाके हाथ पैर छूता रहता है कि भैया आप हमको अपना डेटा देते रहना. इंडिया के बैंक्स एटीएम की लोकेशन कहां होगी, वो पिटनी बाउस उनको डेटा देता है. पिटनी बाउस बता सकता है कि पूरे दुनिया में लेदर की जैकेट कितने लोगों ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे से किसने लेदर की जैकेट दुनिया में खरीदी हैं, क्योंकि सारा जो बैकबोन है लोकेशन जीपीआरएस का, सो दे रन द एंटायर डिजिटल सॉफ्टवेयर बिहाइंड. ट्विटर में जब तुम लॉग ऑन करते हो कि मैं कहां बैठा हूं, या फेसबुक में हम लोग क्लिक करते हैं ना कि हमारी लोकेशन क्या है, दैट इज रन थ्रू अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय पिटनी बाउस. ऑन टॉप ऑफ इट इज ट्विटर और फेसबुक. सो यूपीआई जो यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस इंडिया ने बनाया है, वो उस तरह का एक क्रांतिकारी पूरा एक आर्किटेक्चर है. रुपे इज नॉट अ कार्ड. असली लोग समझते हैं कि मेरा तो मास्टर कार्ड है तो मैं रुपए कार्ड क्यों लूं. तो मास्टर कार्ड भी नहीं है. ऊपर लिखा है एचडीएफसी, नीचे लिखा है मास्टर कार्ड. तो आप एचडीएफसी के पास जाएं, स्टेट बैंक के पास जाएं, किसी बैंक के पास जाएं, आप उनसे मास्टर या वीजा मत लीजिए, आप उनसे केवल लीजिए रुपए. तो बैंक आपका वही रहेगा, लेकिन जो आधार है उसका वो हो जाएगा क्या? रुपे. रुपे इज अ फ्रेमवर्क जो हम इंडियंस ओन करते हैं, जो एनपीसीआई है, जो रिजर्व बैंक की एक कंपनी है.
तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, लोगों को पता ही नहीं है कि रुपए कोई एक नया कार्ड है। कार्ड नहीं है, इट इज ओनली एन आर्किटेक्चर। मास्टर कार्ड और वीजा हजारों करोड़ रुपया इस देश से ले जा चुके हैं, और हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वालों को मालूम ही नहीं है कि कितना पेमेंट बैंकों को, उसको रिटेलर को देना पड़ता है मास्टर कार्ड और वीजा वालों को। और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया इंडिया में कि हमारा रुपए प्लेटफॉर्म डेवलप न हो। आज भी वो उसको सैबोटाज करने में लगे हैं, ये मास्टर कार्ड और वीजा वाले। तो हम लोग चाहते हैं कि हम यूपीआई को प्रमोट करें, रुपए कार्ड को प्रमोट करें, क्योंकि दैट इज कंप्लीटली इंडियन एंड इट इज फ्री। सो बहुत बातें आएंगी, लेकिन एज कलेक्टर्स आप लोग इस चीज से वाकिफ रहें कि आपको किस इकोसिस्टम में काम करना है। आई थिंक सम अदर कलेक्टर्स वांट टू स्पीक। Thank you, sir. Good afternoon, respected sirs, dear colleagues. अभी दिसंबर महीने में एक सब कलेक्टर्स को बताया गया था कि अपने सारे तालुकाओं में अब कम से कम 2 गांव डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड विलेज बनाइए। इट वॉजंट अ कंपल्सरी थिंग, वो कैशलेस नहीं था, बट मूविंग टुवर्ड्स लेस कैश इकोनॉमी। उसके अंदर वी हैड अ वेरी वेरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वी वर इन। नाउ सुरेंद्रनगर जहां से मैं हूं, वहां पे इट इज मेनली अ रूरल, प्रीडोमिनेंटली अ रूरल डिस्ट्रिक्ट। वहां के अपने ही कई किस्म के चैलेंजेस थे, जैसे कि बैंक का सपोर्ट कम था एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। वहां पर मोबाइल नेटवर्क्स में भी दिक्कत थी। सो बेसिकली जो हमको लगा कि चीजें जिनके वजह से जो कुछ हर्डल्स भी आ सकते थे, वो था बैंक सपोर्ट, सेकेंडली नेटवर्क कवरेज, and thirdly the level of education या tech savviness of the people. We are not talking about the rural villages right now, we are talking about townships, but the corollary or the support I can bring from these points is this, that हमने वहां पर वो जो, जैसे कि सुरेंद्रनगर में 10 तालुका, हमने 20 विलेजेस वहां पर भी डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड किए और कोशिश की कि हर विलेज को एक बैंक का सपोर्ट मिले। इसी तरह हमने कोशिश की कि ऐसे विलेज ही चुने जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो, और लोगों को बहुत सारे इंटेंसिवली लोगों को हमने कोशिश की कि उनको ट्रेनिंग मिले कि किस तरह से उनको अपने मोबाइल फोन को यूज करना है या डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना है। सबसे पहले तो उनके अकाउंट्स खुलवाने थे 100%। बट आई बिलीव जो हम टाउनशिप्स की बात कर रहे हैं, वहां पर वी ऑलरेडी आर नॉट डीलिंग विद अ लॉट ऑफ दीज हर्डल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर आई हैव ओनली 3 टाउनशिप्स इन माई डिस्ट्रिक्ट, बट एक कैंटनमेंट है ध्रांगध्रा में, जिसके साथ जैसे ही सर ने हमें बोला तो वी टुक अप द मैटर विद देम एंड आई कॉन्टैक्टेड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एंड द बेस्ट पार्ट वाज वी गॉट एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। दे वर वेरी पॉजिटिव एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू डू इट। तो फिर हमने बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम द रूरल एरियाज जानने की कोशिश की, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो सबसे पहली बात हमें ये पता चली कि उस कैंटनमेंट में ऑलरेडी 3 बैंक्स हैं, उस कैंट में ऑलरेडी 3 एटीएम्स हैं। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द टाउनशिप्स वुड हैव दिस फैसिलिटी। तो सबसे पहला जो हर्डल है दैट इज टेकन केयर ऑफ, आपके पास बैंक प्रेजेंस है वहां पर। सेकेंडली वी फाउंड आउट दैट एवरी फैमिली हैज अ बैंक अकाउंट एंड एवरी फैमिली हैज अ डेबिट कार्ड और अ क्रेडिट कार्ड। दैट टेक्स केयर ऑफ द सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट हर्डल कि हमारा बैंक के साथ लिंकेज है और ये सारी सर्विसेज हैं। थर्डली वी फाउंड आउट कि हमारे नेटवर्क का थोड़ा इशू था, एंड दैट इज वाई द कमांडिंग ऑफिसर, उनके साथ जो ऑफिसर थे, उन्होंने हमें बोला दैट द बिगेस्ट हेल्प वी नीड इज पॉस मशीन्स। सो व्हाट कम्स आउट इज व्हाट आई बिलीव कि पॉस मशीन इज द मोस्ट प्रेफर्ड मोड, बट जो विलेजेस में हमको एक्सपीरियंसेस रहा, यूएसएसडी ऑल्सो वर्क्स वंडरफुली। सर उसका एक्सपीरियंस ये था, व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द विलेजेस, वहां पर 3G नेटवर्क नहीं आता। सो द बेस्ट पार्ट इज दैट यूएसएसडी वर्क्स ऑन 2G ऑल्सो। आपको इतना बड़ा उसके अंदर ब्रॉड बैंडविड्थ नहीं चाहिए। सेकेंडली, मैं अपने खुद के फोन पे MMID अपना जनरेट करके जाता था और अपना खुद का फोन लेके जाता था और गांव में जाके उन लोगों की मदद करने के लिए उनसे दूध खरीदता था और उसी से मैं आंगनबाड़ी को दे देता था, सो दैट दे कुड सी कि इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज इजीली पॉसिबल। और हमने जितने भी दुकानें थी, छोटी छोटी किराना की दुकान थी, उनके बाहर जैसे कि सर ने आपको टेम्पलेट प्रेजेंटेशन में दिखाया कि उनका मोबाइल नंबर, उनका MMID, उनका VPA अगर है तो VPA, बट द बेस्ट पार्ट इज यूएसएसडी ओनली वर्क्स अगर आपका मोबाइल नंबर है और MMID है।
and every transaction was a successful transaction. एक भी वहां पर उनके सामने कोई भी मेरी ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुई जिससे कि उनको थोड़ा भी मन में शक पैदा हो. So not just POS, which obviously is the most preferred mode of payment, but even USSD works wonderfully well. UPI भीम के अंदर जब से ये मुहिम चालू हुई after November, the technology has also evolved a lot, and that is the best part, and we have seen it evolving. So आज इतनी सारी हमारे पास options हैं, not just the POS machine. POS machine is the fastest, easiest. Yes, एक swipe किया हो गया. But even otherwise, जहाँ पर थोड़ा समय भी है, वहाँ पर we can use these technologies. And I think, as Mathur sir said, we should be promoting USSD क्योंकि उसके अंदर transaction cost नहीं है. So there was one thing that we felt that I was sitting in a meeting like this. I made a transaction of 10 rupees, and I could see that 0.15 rupees did get deducted. So that this was about a month ago, sir, not right now. But sir, perhaps, sir, perhaps, sir. So USSD also works wonderfully well. जहां पर नेटवर्क का इशू है, फिर भी अगर लोगों को मोबाइल नेटवर्क ही यूज करना है तो BSNL ने हमको कॉन्टैक्ट किया, एंड दे हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्मॉल टावर्स जो वो लगा देते हैं, एंड इन अ रेंज ऑफ 100 meters दे आर एबल टू बूस्ट देयर सिग्नल्स, एंड इट इज वाया देयर 3G itself that they get it. So this is also one of the things that आप कर सकते हैं. ये आप टावर्स अपने जहां पर मेजर ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, जैसे कि आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां पर यूज किया जा सकता है. Well, since in the cantonment we have just started and these are only the preliminary findings, so we should be able to share further experiences once we go ahead. And we are hoping that in the next 15-20 days हम ध्रांगध्रा cantonment को cashless कर पाएंगे. अच्छी चीज ये है कि villages में अंदर लोगों पर कंट्रोल करना मुश्किल है, उनको बोलना, मोटिवेट करना कि आप cashless ही करिए, ये इतना आसान नहीं है. But I believe in a township or in a cantonment there is more control over people and you can influence their habits better. So अगर कहीं पे possible है तो यहीं पे. So all the best. Thank you, sir. Any other collector? I think we can all. I would really like to place on record, Rajiv, then, my sincere appreciation. मैं नीति आयोग की ओर से, अपनी पर्सनल ओर से, राजीव जी, पूरी टीम का आभारी हूं. आपने एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्कशॉप आज करी है. ये मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि जो एक कैंपेन यहाँ पे आपने जिसको एक जान दी है, और ये भी एज अ कमर्शियल बिजनेस, इट मेक्स वेरी गुड बिजनेस सेंस. इनके फिगर्स बता रहे थे कि इनका सेल पिछले साल दिसंबर-जनवरी में से कंपेयर करें तो 52% GSFC का शायद टोटल सेल बढ़ा है. GNFC. तो GNFC आपका, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई और फर्टिलाइजर कंपनी का आपने मार्केट शेयर अपनी तरफ खींचा है. तो इट इज मेकिंग कमर्शियल एंड बिजनेस सेंस. सो आई एम श्योर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज की टाउनशिप्स हैं उनको ये मैसेज लेके जाना है कि ये पूरा डिजिटल हम अगर होंगे तो एक्चुअली हम अपनी कंपनी का मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करेंगे. और वो एक अगर स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट सेक्टर को टाउनशिप के ट्रांसफॉर्मेशन से दिखती है तो वो बिना आपके मेरे कहे, राजीव जी, वो करेंगे, जैसा इट इज मेकिंग बिजनेस सेंस. तो अल्टीमेटली हर जने को बिजनेस सेंस इसमें दिखेगा. यही इस पूरे कैंपेन का अंततोगत्वा पर्पस है. लेकिन आज आपने ये करा, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. मैं पुनः अमिताभ कांत जी, जो हमारे CEO हैं, बहुत जुझारू हैं, उन्हें पूरे देश में ये डिजिटल पेमेंट का एक बीड़ा उठाया हुआ है. प्रधानमंत्री जी जो चेयरमैन है नीति आयोग के, उन्होंने ये पूरा नंबर 1 प्रायोरिटी का टारगेट काम नीति आयोग का है. तो उसमें आपने हमको भी एक दिशा बताई है, और हम लोग दिल्ली जाके पुनः आज की चर्चा को आगे दिल्ली के स्तर पे भी कैसे हम अन्य टाउनशिप्स को भी प्रेरित करें. तो गुजरात में एक भरूच ही ना रह जाए, लेकिन और जगह भी ये दिए से दिया जले. तो जो भी कलेक्टर साहब, ये जो भी आज 160 या 170 टाउनशिप्स आए हैं, मैं चाहूंगा कि सभी टाउनशिप वाले आज संकल्प लेके जाएं हैं, और संकल्प लें, चाहे खड़े होकर एक नारा भी लगा दें कि हम आज ये बीड़ा उठ. हो सकता है आपके टॉप मैनेजमेंट आपकी बात को कट कर दें, तो आप लेकिन
डगेंगे नहीं हैं, और आप लगे रहेंगे, ऐसा संकल्प लेके जाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. We thank GNFC team and Mr. Madhu for elucidating on the multinational benefits of being cashless, for guiding us with methods, ways and means of going cashless and inspiring us in this direction by this highly informative and enlightening presentation. We thank you all for coming here to this workshop. We hope we have gathered enough valuable inputs by GNFC team in this direction, which will be immensely helpful in implementing the digitalization process at our respective places. We invite you all for lunch, and thank you all once again. Thank you so much. Thank you so much.